ओके वी आर लाइव. कोई इंट्रो एनिमेशन नहीं आई, कुछ नहीं आई, एंड वी हैव देखो, बीन थ्रोन राइट इनटू इट. विलन के लिए विलन एंट्री इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या है? बिल्डअप ही नहीं है इसमें कुछ। कोई बिल्डअप नहीं, कोई कुछ नहीं. एंड इतना पैसा दिया मेलन का इंट्रो वगैरह का, सब डूब गया. But hi everyone, welcome to another stream which we call as Dishaheen plus VM square, and we'll need to come up with a better name for this. हाँ And we have like all four of us today to discuss our favorite villains. And मस्त सबने चारों ने लिस्ट बनाई है. सो बहुत मजा आने वाला है. आप लोग चैट में अपने भी फेवरेट विलन्स बताते रहो. We are going to talk about the most famous ones, but we would also want to know about the lesser known. दिशा ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था हमारे ग्रुप में कि यार do they have to have committed like acts of evil, या they can be ऐसे But slightly bad this, people. yeah, the people that we loathe. And you know what is something I realized after seeing all of our lists is that the reason we get along so well is because we hate the same kind of people. अच्छा, तो Okay, इसमें रियल लाइफ लोगों की बात कर Hatred सकते is हैं ना, from लाइक रियल because लाइफ पीपल वी we don't डोंट like लाइक. the same kind of तो people, but फिफ्थ we hate. स्टैंडर्ड में एक रोहित करके लड़का था जिसने मेरे को I bully hate किया. him so much. You too. Knew it. चैट में अगर कोई रोहित है तो मतलब प्लीज सॉरी, सुधर जाओ. Yeah, बट या great. Hi Vani, how are you? I'm great. How are you? ऑल ग्रेट. वानी ने आज कॉन्टिन्यूटी कैमरा के एक नया फीचर देख लिया, तो आज हमारी सबके लाइक देख रहे हो फ्रेम्स कैसे चमक रही हैं गाइस. यस. और हिंडोल एक बार लैम्प दिखाओ यार अपना दुनिया को. लैंप दिख रहा होगा, आई गेस. ये रहा यहाँ पे, ये रहा यस. लैंप, आई गेस. बट या अमेजिंग. सो गाइस, तो चालू करते हैं. हम सबसे पहले आप लोगों को टिकर दिखाते हैं कि ये जो बनाया, व्हाट आर योर हु आर योर फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट विलन्स. सो हमें बताइए. एंड वील स्टार्ट. हिंडोल, डू यू वांट टू गो फर्स्ट? ओके, तो मैंने अपना थोड़ा सा थीम वाइज डिवाइड किया था. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव लाइक, जैसे दिशा ने बताया कि कुछ कुछ कॉमन हैं. तो इफ़ यू गाइज फील कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपका भी है विलन इंक्लूडेड, सो प्लीज़ उसमें ऐड कर दीजिए, सो लाइक वी कैन हैव अ कंटिन्यूस थ्रेड गोइंग ऑन. ठीक है. तो ठीक है, मैं ऊपर से ही स्टार्ट करता हूँ. तो माई फेवरेट कैटेगरी ऑफ विलन्स इन बॉलीवुड is villains played by Boman Irani. This is like a general मैंने कैटेगरी रखी है. एंड इसमें सबसे टॉप पे आता है डॉक्टर अस्थाना. डॉक्टर अस्थाना इज लाइक वन ऑफ दोज विलन्स whom I think he was not a villain, he was like someone who made really good points. It's just that वो मुन्ना भाई की लाइफ में विलन था, and like that's the hallmark of a great villain. तो मुझे डॉक्टर अस्थाना काफी सही लगता है. लाइक सम ऑफ द पॉइंट्स ही मेक्स इन दिस मूवी आर लाइक ऐसे, मतलब ये नहीं कि हाँ भाई इनको चलो इविल बना दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो बीइंग इविल. तो वो Yeah. मुझे काफी सही लगता है. We don't hate him. We hate what he stands for, Yeah. which is the harsh. Yeah, like even virus for example, virus also makes sense. मतलब कुछ बातें हैं जो वो बोलता है, बहुत सही बात है. इनफैक्ट आई थिंक टुडे ही पोस्टेड सम एड लाइक बमन ईरानी रियल लाइफ में उन्होंने कुछ तो डाला था, उसमें वही उसी का रेफरेंस था कि लाइफ इज अ रेस, अगर नहीं भागोगे तो समथिंग समथिंग वो वाला. तो मुझे काफी लाइक वेल थॉट आउट. ऑब्वियसली इसमें राजकुमार हिरानी का भी हाथ है बहुत, कि वो मतलब उनको काफी अच्छे कैरेक्टर्स देते हैं. इवन दिवाकर बैनर्जी लाइक घोसला में जो खुराना था, तो अगेन दैट वाज आल्सो अ ग्रेट कैरेक्टर. अमेजिंग. या मैन, ये तो एक बहुत बड़ा लाइक रैबिट होल है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. एंड आई थिंक डॉक्टर अस्थाना से अस्थाना से जो आपने जो चालू किया है आज का स्ट्रीम, आई थिंक या मैन, लाइक आई ऑलवेज रिमेम्बर अस्थाना से पहले जो उनका हाथ आता है, फिर दूसरा. क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्या करने नहीं. And yeah, a great like pick to start. And Boman Irani, has Boman Irani played negative like shades? अच्छा, उन्होंने डॉन मूवी में भी नेगेटिव किया था. डॉन में तो प्रॉपर एक्शन वैक्शन किया था उन्होंने, मतलब हाँ नहीं, मेरे को लगा वो राजू हिरानी के अलावा भी लोगों के लिए करते हैं या सिर्फ हिरानी के लिए. नहीं, इवन घोसला का घोसला ही वाज घोसला, yes, that I have also written. Yeah, that. So एंड उसमें भी इतनी बढ़िया बात थी कि लाइक यू थिंक घोसला का लाइक मेन, घोसला नहीं सॉरी खुराना का क्या है कि वो मतलब ऐसे इविल आदमी है, वो जमीन हड़प लेता है, बट उसको भी वल्नरेबल बनाया उन्होंने कि उसका बेटा उससे बात नहीं करता, बेटा बात नहीं करता. हाँ, उसको बस कूल लोग चाहिए दारू पीने के लिए साथ में. एक दिन बैठना है घोसला साहब आपके साथ. एंड ही इज अ वेरी रिलीजियस पर्सन.
हम्म। कि आज अगर लाइक ट्यूसडे है तो ये नहीं करूंगा, हाँ। फ्राइडे है तो ये नहीं करूंगा. Very, very cool stuff. Yeah. Nice. So, yeah, Vani, Disha, do you guys want to talk more about Boman Irani? So I had also put virus in my list because I Mhm. was trying not to repeat. But Mm. even like with virus, he was just what he said. There was so much truth to it. Life is Yeah. a race, Yeah. Yeah, right? And Yeah. he caught these people cheating. How is that wrong? Yeah. yeah, सोचो मतलब आपके घर के बाहर कोई सुसु करके चला जाए and then you're like कि हाँ you know what these guys are great people I'm gonna let this slide. yeah. So No, no, true. yeah, even लगे रहो मुन्ना भाई में जो वो लकी Oh, सिंह वाला वो we are था. not talking about him. Yeah. Oh हाँ, shit. लगे रहो वो कितना बढ़िया कैरेक्टर था यार, मतलब फोटो वोटो खिंचाता है एंड लाइक ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स हैव लाइक सम ऐसे इनर वर्ल्ड कि दैट दे आर फुलफिलिंग बाय बीइंग लाइक इविल पीपल, सो लाइक वेरी वेरी रिलेटेबल. And अभी मैं कुछ दिन पहले लगे रहा हूँ कि एंडिंग देख रहा था. इट स्टिल मेक्स मी क्राई. या और पर्टिकुलरली अगर आप बमन अडानी के पर्सपेक्टिव से देखो, बेटी या मांग लेके एंड लाइक या द हृदय परिवर्तन ही हैज इन दैट सीन, या इट्स ब्यूटीफुल. सो गाइस, जैसे जैसे इफ यू वांट अस टू फीचर योर कमेंट्स जैसे बात कर रहे हैं उसमें, तो जो हम बात जिस टॉपिक की कर रहे हैं पहले उससे रिलेटेड कुछ लिखो. Then the chances of us featuring your comment like would increase. More than 100 people are watching us right now. And please जल्दी से like कर दो stream. अभी 33 likes ही हैं. तो मतलब बहुत प्यारी प्यारी लिस्ट बना के लाए हैं हम. So please do it. There is a super chat by Sanj. That person is saying Negan from Walking Dead. So yes, we are all going to cover all these like amazing like names also. बट अभी हम थोड़ा बमन ईरानी यूनिवर्स में. सो तो मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, मेरी लिस्ट पूरी बॉलीवुड है, लाइक आई डिडंट एक्सपैंड Same, माय same ब्रेन here. क्योंकि आई वाज लाइक कि क्योंकि मैंने लिस्ट बनाना चालू किया बहुत नाम आ गए थे, मैं लाइक ओके आई नीड टू अप्लाई सम फिल्टर, सो आई होप लाइक आप लोग कवर कर लोगे बाकी. सो सो पता है लाइक मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने दिशा की लिस्ट देखी थी ना, एंड आई सॉ शी हैड रिटन वायरस फ्रॉम थ्री इडियट्स. हाँ सो वायरस वाज बमन ईरानी, राइट? हाँ So I thought Disha had written that like 5th September वाला guy जो. चतुर. Be there. Yes, so I thought like it was Chatur. So, वो when बहुत. I asked you that question about are these people who've committed acts of evil or just people that we hate, he was the one I had in my mind because उसने कुछ किया तो नहीं था वैसे, but हाँ, I think आदमी it was. अच्छा नहीं था. I think it was Hindol's tweet, no, a few days ago about Yeah. Chatur. Like, and since then my perspective about Chatur has changed. I respect him a lot. Yeah, so क्या tweet था इंदौर? I was watching ऐसे थ्री इडियट्स टीवी पे, मेरे को रियलाइज हुआ कि यार चतुर एक्चुअली अच्छा आदमी था कि he took two people whom he actually didn't like on a road trip with him all the way to Ladakh, So and that they could meet their friend. so that they could meet their friend. He and was he a was very so driven and passionate. Yeah. He actually cared about his career. एंड सबकी लाइफ में एक ऐसा बंदा होगा, लाइक आई हाँ. कैन लाइक गिव इट इन राइटिंग कि सबने कैसे देखा होगा. मोस्टली ही जस्ट नीडेड फ्रेंड्स यार. ही आल्सो वांटेड टू हैंग आउट विद द कूल किड्स इन टाउन. Yeah, he just didn't know how to make friends without like being the क्या बोलते हैं like मेरे को Chatur. बेस्ट रहना है हर ग्रुप में, तो Oh, his name was Silencer actually. हाँ. साइलेंस. Yeah. नहीं, चतुर उसका असली नाम था, चतुर रामलिंगम, एंड साइलेंसर उसको Yeah, बुलाते. yeah. But yeah. Yeah. It took me some time to realize also who was Chatur in Three Idiots because I'm used to Silencer. Yeah. Most of us are used to Silencer, the word Silencer. और देयर वाज दिस समवन इन इट जो बीट लाइक वानी वुड नो. हमारे कॉलेज में देयर यूज्ड टू बी दिस डॉग which whose B-Tech. his name B-Tech. Then there Yeah. was Tech also. There Yeah. that came from Three Idiots. Like उसमें भी ऐसा कुछ Oh, था ना? I didn't know that. Yeah, because उसमें कोई था जिसका नाम हाँ. B-Tech क्या था नहीं, हिंदौर? उसमें वो होता है जब आर माधवन आता है कॉलेज में, सो उसका वो दिखाते हैं कि फोटोग्राफर है ये, तो बोलते हैं कि ये किलो बाइट है, ये इसकी माम गीगा बाइट है, और इनकी हाँ. फोटो ले लो, ये फैमिली बाइट नहीं करती. Yeah. So megabyte kilobyte. So that B-Tech वाला जो reference था, yeah, Three Idiots All the reference. cats in our college were named after Chinese dishes. They didn't have Ah. names, वो उनका कॉलेज था, हम लोग आते थे वहाँ पे. वो जयकांत शिकरे था वहाँ के. Yeah. Yeah, we also So, need to talk about Jaykant Shikre, but yeah. हाँ, काफी- जयकांत शिकरे की भी हम Oh, बात करने वाले हैं. Jaykant Shikre is in my list, yeah. Yeah. And yeah, so shall we move forward? Bollywood हाँ. से हमें और बताइए कि और कौन से villains की आप बात करना चाहते हैं. Let's talk about Jaykant Shikre only. Yes, let's do that.
Uh, बढ़िया हृदय है जयकांत शिकरे. I think I was so I don't like him because of his villainness so Hmm. much as much as I like him because of the last scene in the movie where he's crying in front of all the police fellas. That's That such kind a of brilliant scene. that's a really really चीटिंग nice करता है scene. तू, राइट? yeah, हाँ, yeah. cheating Cheating करता है कर. तो. Then he goes to the commissioner and he's like मैं तो यहाँ पे हुई नहीं. Then he's like cheating करता है. It's nice. I love Yeah. that scene. जयकांत शिकरे is Prakash Raj, right? Prakash, Prakash Raj. Yeah. 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 Prakash His Raj. I Twitter, actually his, like Prakash Raj in general. I his love Twitter his. is amazing. Yeah. Yeah, Yeah. 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 What is Yeah. it about usually? Like he's very like upfront about like how he Hmm. feels and like very very मतलब कोई ऐसे filters नहीं है उनके, तो Yeah. जो feel You're कर रहे talking हो तो about him वो. as a person? Him as Yeah, a yeah, yeah, person. yeah. Okay. एंड हाँ. मतलब काफी सही एक्टर है इन जनरल. प्रकाश राज मतलब वही ना, अब मतलब अपनी इतनी साउथ की पिक्चरें देख लें डब वाली इतनी कि यू नो कि आदमी है विलन. तो देयर वाज दिस, अभी मैं तेलुगु मूवी देख रहा था कुछ दिन पहले, उसमें ये था कि फर्स्ट हाफ में वो लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार प्रकाश राज बहुत अच्छा इंसान है, हीरो की हेल्प कर रहा है, लाइक वेरी नाइस पर्सन. मैंने चलो ठीक है, आई विल बिलीव यू. सेकंड हाफ में वही विलन लगा. मैं तो बोला था, मैं पहले सीन में बोला था ये आदमी विलन है. No, but I think he was. He's played good guy also in a couple या of या movies, no? ही हैज Yeah. प्लेड गुड पीपल, बट अभी इतना उनका एसोसिएशन वैसा हो गया है. I know. But I And really like him. this for it, I feel. Him and Adisheshan from Yeah, Shivaji the yeah, Kavi. Because if, at least with him, it's just that he looks so innocent. Ki hmm, if he's playing the part of a villain, you know you have to be scared of this guy. yeah. क्योंकि वो इतना सीधा साधा दिखता है. That was the reasoning for me. Like he was in my list. Yeah. Nice, nice. Do you know who I'm talking about? There's Then हाँ आदि से अच्छा शिवाजी द नहीं बॉस नहीं, तो मेरे को नहीं yeah. पता था. मैंने I think शिवाजी you द haven't बॉस. I've watched Shivaji. seen Shivaji the Boss, but I can't remember who the villain is. अरे इट्स द गाय Wait, जो ऐसे गोरा गोरा से एक आदमी Oh, रहता है yeah, yeah, yeah. जो उसको बोलता है कि अरे ये क्या हो गया शिवाजी, सड़क पे आ गए, उसको 1 रुपए को कॉइन देता है कि भीख मांगो शिवाजी. oh, yeah, yeah, दैट yeah. गाय. The guy who wears specs also. ऐसे black hair. सनग्लासेस Got it. में. Yeah. तो उसके forehead पे He's जो very chill. Yeah, he's Yeah, actually very scary. yeah. I he don't know is why. right. Yeah, Yeah. I don't know why you thought he's a nice guy. I mean, उसकी शक्ल से देख के ही लगता है. उसको No, तो उसके लिए अलग म्यूजिक आता है यार जब भी वो Yeah, आता है. he's meant to play the villain. Especially उसके glasses are like, if these are my glasses and I wear them like this, he wears them like this. They are like here. Oh, I have like another like मैंने ये लिस्ट में लिखा था, बट अभी एक विलन आया मेरे दिमाग में. बट उससे पहले 125 people are watching us with 50 likes, guys. ये थोड़ा शर्म की बात है, और हम इतनी मेहनत करके आए हैं. तो मेरे को लगता है अगर वानी दिशा भी बोलेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा. गाइस थोड़ा आप रिक्वेस्ट कीजिए, मेरी बोलने से तो अभी तक 25 ही लाइक आया. Guys, do like the stream. You know the drill. The more you like the stream, the more it gets recommended to people and helps us grow in turn. यस, एंड लेजिट आपको रियल टाइम दिखेगा. मतलब आप लाइक करोगे, आपको दिखेगा ओ शिट नंबर बढ़ रहा है. इट इज अ रियल टाइम लाइक थिंग, सो यू गेट टू एक्सपीरियंस दिस. Yeah. Okay, so Don't be a villain, be a hero. Yes. yeah, uh, Vani, did you want to say something? Yeah, I wanted to go. So Prakash Raj reminds me of Ashutosh Rana a lot. I don't know why. Yeah. And Nice. I haven't seen the movie Sangharsh, but मैंने जितना भी वो like memes और Yeah. gifs में देखा है, I can't watch this movie only because Ashutosh Rana का character looks so scary. I think he's He is called very Lajja Shankar Pandey. Yeah. The scene where he's like, oh Yeah, god. guys, थोड़ी हमारी तारीफ हो रही है सब. Yeah. So Thank you, yeah, Anand. Anandita, thank you so much. And Anandita is puts the cutest like photos of us in her Insta story. So Yeah. that is something to look forward to. Thank you so much, Anandita. But like yeah, so do you want to like talk more about this, Vani? I mean, I haven't seen the movie. I know what it is about. So the character of Ashutosh Rana kidnaps kids and वो उनकी बलि देता है because he thinks that after a point he'll reach what is it called? He'll be Amar of sorts. He won't be able to, I don't think he'll be able to die, something like that. And बीच में whatever shots you'll see of him on YouTube, and मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी movie बैठ के देखूं because his character is so scary. I've seen shots on YouTube. I've seen small snippets from the YouTube channel. YouTube पे जो भी snippets आते हैं, and he's played it so well that you're actually scared of him.
Yeah. I don't know how to go back to Yeah. not being afraid of Ashutosh Rana. मेरे को हिंडोल वानी एक बात बताओ, अगर आशुतोष राणा की आंखें थोड़ी सी छोटी होती तो Hmm. क्या वो इतने स्केरी होते? आई थिंक इट्स ऑल इज No. इन हिज आईज. Yeah, yeah, yeah. His It's eyes. also his voice. He has a very good voice. Yeah. या उनकी मतलब एक वो पोइट्री की क्लिप है जो बहुत वायरल होती रहती है. सो रश्मि रथी जो पोएम है, हिंदी की बहुत फेमस पोएम है, वो रिसाइट कर रहे हो, कोई तो न्यूज का इवेंट था वहां पे, एंड वो हर साल वायरल होती है बिकॉज लाइक इट्स दैट गुड. इट्स मतलब वो कैजुअली वो पूरी पोएम सुना देता है, एंड इट्स वेरी गुड, लाइक दैट आई वुड या अर्ज एवरीवन टू एंड चेक इट. एंड Yeah. इवन ही वाज इन पठान, राइट? मेरे को पठान में भी लग रहा था यार ये I हाउ इज ही ऑन द Yeah. गुड साइड. मेरे को लग रहा Exactly. था I was कुछ thinking तो like, Abhi, he was in हाँ, war also. Yeah. And हाँ, I saw war and everything else. या नहीं नहीं वानी चल रहा है, सब चल Even रहा है, better. कंटिन्यू कंटिन्यू. I saw war. I saw these other movies before I saw war. Hmm. No, not war, but Pathan, I think. And I just couldn't believe he's on the right side. I thought, abhi ye kuch karega, abhi ye Yeah. kuch karega, abhi kuch या karega. So yeah. होता आशुतोष है. राणा का अगर आपको देखना है तो टू मूवीज आई वुड रिकमेंड. एक है हासिल, जो तिग्मांशु धूलिया की फर्स्ट फिल्म थी. इट हैज इरफान खान आल्सो इन अ नेगेटिव रोल, एंड Yeah. ये दोनों मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होता है. सो उनका शुरू ही वहीं से होता है कि आशुतोष राणा गेट्स इरफान खान बीटन अप, एंड इट्स सच अ गुड सीन. लाइक बोथ ऑफ देम हैव लाइक रियली गुड लाइंस. जैसे पूरा सीटी मार वो पूरा ही है. दैट इज वन. एंड सेकंड सोन चिड़िया, इफ यू गाइस हैवंट वॉच्ड, तो ओह, उसमें भी बहुत. सो ही so इज लाइक कंप्लीटली बॉल्ड इन दैट मूवी, एंड बहुत उनका बढ़िया लुक था उसमें. I सो think we should get Ashutosh Rana on Chalchitra Talks. बहुत yeah. तगड़ा एपिसोड होगा. या तो वो करना चाहिए. एंड लाइक I'm going to. सोन चिड़िया से याद आया, Hmm. अभी कुछ दिन पहले मैंने और हिंडोल ने Hmm. सोन चिड़िया के डायरेक्टर के साथ एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है, अभिषेक चौबे. इट्स अ ग्रेट एपिसोड, इट विल बी कमिंग आउट सून. मस्त रिकमेंडेशंस दिए उन्होंने. बट या ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन, आशुतोष राणा एज अ राइटर, उन्होंने बुक्स लिखी है. तो उनकी एक किताब है राम राज्य करके. सो इट्स लाइक अ पर्सपेक्टिव ऑन रामायण. द पार्ट जो मतलब हम लोग मोस्टली स्किप कर देते कि लाइक आफ्टर राम केम बैक फ्रॉम वनवास, एंड उनका जो पूरा रूलिंग वाला पार्ट था वो कैसा था, उस पर उन्होंने बुक लिखी है. सो लाइक ही हैज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स ऑन दीस थिंग्स वाओ आल्सो. सो या. वाओ. You should get him for Kitabi Cabins. या मैं कह रहा था कि एक मैंने लिस्ट में नहीं लिखा था, बट देयर इज दिस वन पर्सन आई वांट टू टॉक अबाउट. नाना पाटेकर फ्रॉम ब्लफ मास्टर. Oh. Yeah. सो ही वाज फक, सो I गुड इन completely. ब्लफ मास्टर. वो खुद की पूजा जो करते थे. Yeah, एंड and वो such वाला. a human side of like a villain who is self-obsessed, who wants to be like a more famous villain or something like. इवन नाना पाटेकर इन परिंदा, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट, बट परिंदा में जो उन्होंने किया था लाइक, सो उसको वो होता है कि ही इज लाइक अ वेरी ड्रेडफुल गैंगस्टर Yeah, वगैरह, बट ही स्कैर्ड ऑफ फायर, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली फायर में जल के मर गई थी. तो उसका वो था हर सीन में कहीं ना कहीं से वो फायर ले आते हैं, एंड सो इट्स लाइक एक गैंगस्टर है जो सबको डरा रहा है, एंड देन ही इज आल्सो स्कैर्ड ऑफ फायर. सो लाइक वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय नाना पाटेकर. सो या. yeah. नाना पाटेकर इन जनरल सिद्धेश तिवारी Yeah. कह रहे हैं. यस, एब्सोल्युटली राइट. हर चीज में ही नाना पाटेकर. अब तक छप्पन का वो एक रील में आता है ना, पार्टी चल रही होती है और वो गोली चलाने लग जाते हैं. कौन सी मूवी है वो? And there is some 90s movie where उसमें वो it's such a mood की like किसी की बर्थडे पार्टी में जाके बोल रही है behave like adults. Yeah. So Even in नाना. टैक्सी नंबर 911 उसमें भी उनका इतना बढ़िया था कि वो टैक्सी चलाता, मतलब बेटे की उन्होंने पेंटिंग वगैरह लगा रखी है टैक्सी में. Yeah. So yeah. तो मेरे दो चार जो लाइफ में हार्ट ब्रेक हुए हैं, एक प्रॉपर हार्ट ब्रेक तब हुआ था जब मेरे को पता चला था टैक्सी 911 किसी बाहर की मूवी से अडेप्टेड है. Right. पहले मेरे को लगता था अरे इंडियंस ने लिखी है, क्या मचा दिया इंडियंस ने, कितना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है. एंड देन लाइक शिट, ये कहीं से चुराई है. आई वाज सो हार्ट ब्रोकन यार. Even ब्लफ मास्टर भी तो मतलब कोई तो फिल्म में उसका कॉपी. ऐसे मत करो यार, और अभी हार्ट ब्रेक नहीं झेल सकता. ठीक है, चलने तो जैसा चल रहा है. ठीक है, मूविंग ऑन. और बताइए किसके बारे में बात करना चाहते हैं guys? अभी हम बॉलीवुड ही कवर कर रहे हैं. Okay. I want to talk about this movie. I don't know if you guys remember, there was this movie called Makdi. Oh Yeah. yes. Even I was And going to put her in my list. yeah, and so it was Shabana Azmi's character, and Amazing. till now I know the whole story, but till now I haven't been able to watch that movie properly because she's so scary in that movie. I mean, मैंने try Yeah. नहीं किया recent उनके years में. नेल्स होते थे ना Yeah, they were खतरनाक. like those long fingers जो हमने I what
Everything Everywhere All at Once. What's the movie? Just Yeah, long हाँ. fingers. we like Makri did it before they did it in the movie. Oh, Yeah. If you Makri know was a what I genuinely scary movie. Like वो मतलब है, genuinely scary it movie. holds Yes, up. yes, yes. Yeah, and maybe it's because we were very young when it came Mhm. out. Yeah. Yeah. और किसी तो पोगो या कार्टून नेटवर्क पे ही आ जाती थी हाँ हाँ कुछ हाँ. तो है ना पोगो पे आती रहती थी, पोगो पोगो पे हमेशा पोगो लगी पे होती थी. Yeah. Worst thing ever. बेस्ट थिंग एवर Yeah. आल्सो But also, it had a very good song. Ungli दबा हाँ, के वो पापड़ अंगूठा वाले बंगाना ले. मांगी. Yeah. I काफी love that मोटिवेशनल song. गाना है, मैं तो बहुत सुनता हूँ मूवीज. या सो या मैं एक विलेन की बात करना चाहता हूँ अच्छा, दैट एक इज विलन. हाँ, एक विलन भी अच्छी फिल्म थी. मैं एक विलन की बात करना चाहता हूँ who was there in multiple films and his name is Deepak Tijori. So Deepak Tijori in Kabhi Haan Kabhi Na. हम्म. Deepak Tijori in like a lot of other films, particularly Kabhi Haan Kabhi Na में ना मतलब इतना गुस्सा आता था ना उसको देख के यार तू शाहरुख को क्यों नहीं जीतने दे रहा ना मतलब it was like very एंड उनकी इमेज भी शायद वैसी ही थी लाइक दैट विलेनिश जो जीता है वो सिकंदर की वजह से भी पर्टिकुलरली हो गया Yeah. था आर देयर मोर मूवीज जहाँ पे ही वाज दैट विलेन He He's was मतलब always he was the played a go-to villain. hero का best friend slash villain category. I've उसकी वो never champion seen a थे. movie where he was actually best. I've always seen him in negative या roles. इन नेगेटिव No, लाइक there's that one शेड्स ना, आशिकी में वो मतलब I हीरो के haven't बेस्ट seen फ्रेंड होता है. Ashiki. Yeah. आशिकी की इतनी फनी स्टोरी है कि he was supposed to be the hero and then they were like कि नहीं आप अब बेस्ट फ्रेंड हो, हीरो हम किसी और को ले. या सो दीपक तिजोरी ने मेरे को बड़े ऐसे नाइटमेयर्स दिए मतलब मेरे को जनरली देख के लगता था यार इसके साथ इतना अच्छा मतलब Yeah. व्हाई डज ही गेट एवरीथिंग एंड नॉट लाइक आवर लाइक लीड एक्टर्स सो बड़ा ही कैसे उसके साथ मेरा गुड ट्रॉमा अटैच्ड है एंड या कैसे और बताओ हाँ. ऑन द टॉपिक ऑफ शबाना आजमीन मकड़ी, ये मैंने एक और थीम बनाई थी. सो इसका मैंने नाम दिया है द मेट्रियार्क्स. तो these are like very strong women who were like the villains, ऐसा प्रॉपर फुल ऑन इविल. तो इसमें मैंने लिखा था सीमा पावा इन दिस वन, गंगूबाई काठियावाड़ी, Oh, सुप्रिया पाठक इन रामलीला एंड दीप्ति नवल इन NH10. तो ये तीन मैंने रखे थे इसमें. I also have Amazing. the Ba from Ram Leela. Yeah, I think I Supriya Pathak Disha की लिस्ट में भी है. So like it, I was very interested to see like ऐसे सबकी लिस्ट में कैसे आ गई. Nice. And I'm so happy आपने दीप्ति नवल from NH10 बोला bro. Yeah. Crazy. उनका Yeah. like she was such a chilling presence. Like उनका I think 10-15 मिनट का ही रोल है towards the end, but it was like so terrifying to see her that way. I don't think Yeah. NH10 मैंने वापस देखी है like since the time I saw it, but I Same, still same. remember कि how Yeah, yeah, impactful yeah, her yeah. role was. बहुत authentic movie थी वो. Yeah. Like it felt very real. Yeah. Yeah. Do you guys want to talk about all the names that you just mentioned, guys? yeah. Especially Supriya Pathak, since like you guys also have her Yeah. on the I list. think that Oh. scene where she just cuts off the finger of Deepika Padukone, Mhm. and also where the Aarti before she gets shot, the way she's doing. Yeah. Guys, reel बनेगी यार reel बनेगी. Timestamp note करो. But I mean, yeah, that's very scary. Like she just her face switches and she looks upar and she's like, she knows कि अभी रणवीर सिंह के लिए shoot होगा and she just gives a stare. Yeah. And just 2 minutes before that, she's all smiling and chill with Ranveer Singh. I don't want a woman like that in my life. Supriya Pathak like in Shanghai also. Sorry. Yeah, Supriya Pathak in Shanghai also I really like a lot. I think she has only one or two scenes, but oh my god, I remember everything about it. जहाँ से वो स्लो मोशन चालू होता है अबे देल जब लाइक ऐसे मेटल डिटेक्टर के थ्रू जाता है एंड वहाँ पे बड़ी काम कंपोज से सीएम बैठी है और उससे बात कर रही है. So getting that body language right ना. Yeah. So I am very fascinated by how you show the body language of successful people. तो उनमें ना बहुत subtle gestures होते हैं where they don't need to show that they are successful. And Supriya Pathak getting that right. Amazing. और वो कुछ भी नहीं करती बट मेरे को इतना डर लग गया था देख के holy shit she is so crazy. Yeah. Yeah. So I think one of the most interesting things about villains is कि like obviously they are violent, but it doesn't have to be over the top ऐसे physical violence की जरूरत नहीं है. Like even just through gestures and like very small expressions you can also be violent in that sense. So I think इन सारे जिनों की हमने बात की,
some of it also comes into that category, I guess. Yeah. एंड गाइज एक तो स्ट्रीम लाइक कर दो और हिंडोल की तारीफ हो रही है. हिंडोल आई लाइक योर शॉट स्पेशली द थॉमस एंड एसआरके वाली. Nice. हिंडोल भाई Yeah. बहुत बढ़िया. कल और शूट कर रहे हैं हम कल लोग. और शूट कर रहे हैं हम. या या और Hey, are बताओ. we discussing only movie wale villains or like a No daily no no show? no, we Just can do movie? cartoons, we can do daily, like Yeah, TV yeah. soaps, Okay. everything. Disha, what did you think about Supriya Pathak? So the thing is that I feel like all of us, especially because we grew up watching Khichdi, we've हाँ. always seen this very warm, loving side of hers. Yeah. So when she does her mean stare, it's Hmm. genuinely chilling. Yeah. Yeah. I feel like that also plays a huge role. And as Hindol was saying, showing too much aggression, like through body language and doing too much, that's not that scary. But if the person is sitting very shant and, Hmm. just through like expressions and stuff, that scares me also. Yeah. Yeah. In real life, yeah. Yeah. True. So, on topic of like daily soaps, my favorite villain is Komalika from. Yes, I asked that question because I wanted to talk about Kamalika. Hmm. This is like, hey, we've not spoken about her. Like वो Oh, इसमें. my favorite Sorry. villain is Jolly Bindra from Big Boss. He's यार not. विलन नहीं बोल सकते यार, He's मतलब not शी इज अ villain. रियल Yeah. But yeah, Kamalika was chilling as a child when we used to watch it. वैसे वो फिल्म अप्रिसिएशन वगैरह में बोलता है ना कि मीज़ों से होता है, कैसे साउंड होता है, लाइट होती है, सब कुछ साथ में आता है, देन अ सीन कम्स टुगेदर. आई थिंक कोमोलिका वाज द फर्स्ट एग्जांपल कि जब भी Yeah. कोमोलिका आती थी एक वो म्यूजिक आता था. And then she used to be like, या Kamalika. या Vani My cracked the voice, like legit, बिल्कुल वो voice. And then she used to talk to herself, like या out loud. या It's really hilarious. Yeah, so आनंदिता का एक बहुत अच्छा कमेंट आया. My mom is also the scariest when she's over. यही गेम है भाई, सबकी सेम टेक्स्ट बुक है भाई. Yeah, so मैं ऑमलेट खाऊंगा चल रहा है. एंड और डेली सोप्स Yeah, में so किसकी what I तारीफ. was going to say is Yeah. ki, my experience of Komalika was that even if you go back and look at videos of her, there's definitely a compilation somewhere of her best scenes. It's that when she was introduced, so I used to watch Kasauti Zindagi Ki regularly with my mom. And when Komalika was introduced, she had far better fashion sense. She was much more confident and independent than the female lead. Yeah. या I asked my mom, ki, how is she supposed to be the person that we hate? Because she is much Asking the more. right questions. Yes. Yeah. I wouldn't have And so like that much was, brain I then. feel like Komalika is the reason we had this whole discussion about morality because for the first time, that was like my first exposure to evil in a very Wow. attractive form. I So, Guys, in my Kamalika we problem with trust. Kamalika In, were her eyeshadows and bindis. या Like too and she loud. was wearing sleeveless blouses back But I then. was all chill. But then like her eye makeup was something that was. But या yeah, yeah, maybe that's but why I like still don't Had wear her eyeshadow. theme There's song. this. Shweta Tiwari didn't have a theme song. Yeah. No, but नहीं you know उसका what? तो There's this. एड वाला होता ना कि कसौटी जिंदगी की, जो स्टार्टिंग में आता था. People, Yeah. she was No, but always playing a victim, but Komalika was driven and she was always I doing need things. to recommend a video, BuzzFeed ki ek Okay. video which Srishti Dikshit did, Hmm. and it's about something related to makeup. And there she Hmm. has a line कि eyeliner कैसे लगाना and everything. And then Hmm. there's a line, but बचपन से एकता दीदी ने मुझे प्रेरणा बनना सिखाया है, कमोलिका नहीं. So she says fuck off to eyeshadow, and I think that's the most underrated line I've ever heard in my life. नाइस. Nice. और ये मेरे को बहुत सही लगी, लाइक द थ्योरी जो पूरी दिशा ने बताई. एंड एज अ किड यू कैन ऑलवेज थिंक इट यार, लाइक हाउ इज शी द बैड पर्सन. Yeah. सो गाइस एक हैशटैग चालू हो जाए, इन कमोलिका वी ट्रस्ट. Hmm. एंड आज Yeah. से Yeah, वो ही and है, लाइक जो दिशा ने भी मतलब बताया कि like how evil is made out to be like cool and seductive in a sense, ये मतलब एक बहुत बढ़िया फिल्म थी, उसमें उन लोगों ने टच किया था. फिल्म का नाम है रावण. अगर आप लोगों को याद हो तो उसका भी वही था ना कि जो लूसीफर उसका बेटा, मतलब जो इसका शाहरुख का बेटा होता है, उसको लगता है कि विलन्स आर कूल एंड विलन्स बहुत बढ़िया होता है, एंड देन ही मेक्स अ गेम टू मेक हिम रियलाइज कि नहीं भाई, हीरो इंपॉर्टेंट होता है. सो या रावण आल्सो, लाइक आई डोंट नो, मतलब अर्जुन रामपाल वाज गुड इन रावण आई गेस. सो या anyway, या small detour, coming back to नहीं मैं You the know, हम Shah Rukh Khan say, do you guys remember Dar?
of course. Yeah. या डर की बात कर लेते हैं या I hated it. I cringed a lot, but I also was like very scared when he shows the chest with all the with Kiran written on it. या माय फेवरेट लाइक विलन वाला शाहरुख का है बाजीगर. वो पर्टिकुलरली जब डेड बॉडी को अटैची में डाल के पानी में डालता है ना, Mm, और वो जैसे अपने आई लेंसेज चेंज करता है ना आंखों में, वो हाँ, कॉन्टैक्ट लेंसेज, आ हा yeah. हा, बड़ा मतलब ऐसे But like बहुत. the greatest moment is वो जो उसको छत पे ले जाता है and then he's हाँ like हाँ मैं हाँ. तुम्हें आजाद कर रहा हूँ किरण, and फिर वो उसको गिरा देता एंड द है. म्यूजिक वाज रियली Yeah, नाइसली डन, मेरे को आज भी याद है, लाइक yeah, इट्स लाइक. और इसमें एक वो लाइन आती है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने. yeah, या बट क्रेजी यार, शाहरुख एज अ विलन कैन बी रियली गुड. yeah, yeah. Are we missing out on any, like apart from Dar and Bazikar, where we saw Shahrukh as the villain? I loved Paheli, but he wasn't Hmm. the villain necessarily. हाँ, Yeah, he was a great Ghost. character. But yeah, Yeah, he Ghost. it's been a while. I think मतलब Dawn kind of Oh, counts. Dawn, हाँ, हाँ, Dawn. Dawn मतलब एंटी हीरो वाला वो जोन था. Similarly, रईस वाला होता. But that's like anti hero, like not हाँ, villain. Villain. anti-hero, not villain. Yeah, Huh. yeah, yeah. But like yeah, I think it's. I don't think he'll again do it, but like it would be great to see like Shah Rukh Khan at this age in a negative role. But yeah, I don't think he'll do it. Mm. My Hmm. problem with Race was that he died at the end. I haven't Yeah. seen Like, I was Raees. just like, hey, I mean, this didn't really sit right with me. Like, I'm liking a character, and then this is just a very lazy ending. I mean, I thought it was a very lazy ending. I haven't seen Raees, and thank you for spoiling it, Vani. Yeah. Yeah. You won't really हाँ mind it. It's not हाँ. a. I नहीं, don't Chat think. इसलिए नहीं में देखी, इसीलिए नहीं देखी मैंने. chat में people have pointed out fan also like he Oh, was the yeah. fan was the villain actually, The right, fan was the right. villain, and in a way, even the superstar was the villain to the fan. So, like playing himself with like such in a grey way on screen was like very interesting to see. मतलब है fan I Yeah. think लोगों को वापस देखनी चाहिए. But yeah, सत्यजीत ने मतलब, हाँ, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट yeah, इनकरेक्टली, अंजाम एंड डुप्लीकेट भी बताई है. हाँ, Mm. या duplicate में double role था उनका. Fun movie. या Mm. सो ग्रेट लाइक पिक्स Even यार. Saif Ali Khan in Omkar, what was his name? लंगड़ा त्यागी. लंगड़ा Yeah, त्यागी. Langda मैं Tyagi. अभी मैं लिटरली हथौड़ा त्यागी बोलने वाला था. Even Thoda Tyagi was great. हथौड़ा लंगड़ा त्यागी त्यागी was was so good. So yeah. good. I had Yeah. chill. I loved that series. I think it was one of the first few series. Jab like Indian TV series were like making it big, and then everyone was talking about them. I was like, nay, nay, nay. But then this was one of the first few series which Mm-hmm. instilled my trust in, okay, these are amazing. So These are. I I still am an believe idiot. I still believe Patal Lok is the best show to we have made in India. Mm-hmm. Yeah, Um, nothing has topped it until now. So yeah, yeah. I think so as well. एंड ऑन द टॉपिक ऑफ अभिषेक बैनर्जी प्लेइंग विलन्स, ये फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं है बट इसे मैं रखा नहीं था लिस्ट में, बट अभी मैं बोल देता हूँ. देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड अज्जी ऑन नेटफ्लिक्स. आप Yes, जाके it Oh, is देखिए. by Devashish देवशीष Makhija. मखीजा. मैं थोड़ा Yeah. वार्निंग दे देता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फिल्म है. Mani, सो have लाइक you seen Ajji? yeah, you recommended to me, and then I saw it, and it's I या recommended Ajji to you. yeah, you were like, yeah, Why would I do that? Well, I it's don't a know. great film. It's या very, very dark. It's like It's या very. very disturbing. It's very disturbing. Fuck, I asked you to watch Ajji. Yeah, it happened during the lockdown. No, because it's a very heavy film. या It's a very, very But heavy it's film. good, and या like the way, because na again there is no filters when it comes to Devashish, so matlab pura या. matlab oh ho. मैंने मामी में देखी थी, एंड रिमेंबर द एंटायर हॉल वाज क्वाइट. ऐसे वो होता है ना कि लोग पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं, ये मतलब 4 स्टेप and उसके आगे and चला गया. that's what Devashish always Yeah. tries to do with Yeah. whatever he makes, so it's crazy. प्लीज डू चेक इट आउट. ऑल्सो लाइक ट्रिगर ऐसे जितनी Yeah, yeah, वार्निंग है सारी, बट but लाइक uske इफ baad यू आर इन अ dekh hi गुड lo मूड डोंट actually. वॉच इट, बट प्लीज वॉच इट. Yeah, that's actually how it is to be watched. So yeah, do you guys want to talk about more? Because मेरे पास एक बहुत बड़ी outside of India की लिस्ट है, but उस पे आराम से आएंगे. अभी I don't think we are nearly done with the Bollywood वाला. So yes, guys, tell us more. I love it when Priyanka Chopra plays villain. Yeah. I love her Etras, in Aitraz, yeah. Yeah. And then Etras. also in general, whenever she does anything that's even slightly negative, जैसे जैसे I fashion. think fashion was a Fashion negative. negative तो नहीं है, negative Yeah. तो नहीं. I think Sat Khoon Maaf mein it's a little grey. ग्रे कैरेक्टर. या Yeah. But Aitraz was
Yeah. I mean, there are people you never want to meet, and there are characters you never want to meet in life. Mhm. Yeah. The characters that I've listed down are the ones I never want to have in my life, अच्छा, basically. चलो अभी I हम लोग रियल लाइफ की बात कर रहे हैं तो आई हैव अ विलन जो रियल लाइफ से नहीं है बट नो डिस्कशन अबाउट विलन्स इज कंप्लीट विदाउट मेंशनिंग दिस पर्सन. तो ये है अमरीश पुरी. एंड अमरीश पुरी की yeah. मैंने दो रोल्स लिखे लाइक जो बचपन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे मेरे लिए. वन वाज जो एनिमेटेड रामायण थी जापानीज वाली. उसमें Beautiful उन recommendation. उसमें उन्होंने रावण की आवाज़ दी थी. एंड मतलब जिसने भी कास्टिंग की थी आई वांट टू लाइक थैंक दैट पर्सन बिकॉज it was appropriate, it was bang on, and they got everything right. That and Nayak में जो उन्होंने Yes, I स्क्रिप्ट just लिखे थे. remembered I have also written Nayak. Nayak. Yeah, Yes. yeah. So yeah, Amrish Puri was like he was Yeah. born to Or play. Mogambo खुश हुआ guys. Yeah, Yeah, Mogambo. Mogambo was yeah, on my list, but then I removed it because he yeah, was in that But like we scene. need to still mention it. We yeah. are Yeah. doing favorite villains. Yeah. Abhi, Like like we when Satish Kaushik passed away, I watched Mr. India again, and it holds up. Like every single beat holds up. Like I was crying with the movie. yeah. Mogambo है मेरे को इसको मारूंगा मैं पकड़ के. And like the fact that he's so good makes you Hmm. feel that hating him. So Amrish Puri always legend. Yeah. There is a thoda indie recommendation I want to give, but before that, guys, please we can finish off with the mainstream records. So हाँ हाँ. Bollywood में mainstream अगर आप और बात करना चाहते हैं दिशा. I also Hmm. like Amrish Puri. It wasn't on my list, but I just remembered Andaz Apna Apna mein Gogo. Yeah. What was his name? Hmm. Gogo Don or Crime Crime Master. Master Crime Gogo. Time Master Master Gogo. Gogo. Yeah. Yeah. Those were one of the few first comments on our video Yeah. also Oh, today. okay. हाँ. Yeah. Time Master Gogo उसका भी वो was. लाइन था ना कि मोगैम्बो का भतीजा गोगो. तो so they had He actually was very intended. funny. Yeah. I kind of I am not able to appreciate Andaz Apna Apna like other people usually do, but Crime Master Gogo always I always skip to that part. Yeah. Mm. I Ek, really liked yeah. Ritesh Deshmukh's character, not him the way he portrayed it, but the character in Ek Tha Villain, Yeah. like how he was super frustrated with his wife and he would go out and take it out on other women. I thought that was very interesting. I haven't seen the I movie, remember but it Yeah. sounds scary. one one scene that I remember उसमें ये था कि वो और उसकी फैमिली कहीं तो जा रहे होते हैं ऑटो में और वो मीटर देख रहा होता है बार बार एंड सडनली द मीटर हिट्स लाइक 50 और 60 रुपीज एंड वो ऑटो वाले को बीच रोड में रुका देते कि भैया रुक दो एंड देन ही गेट्स ऑफ एंड ही इज लाइक मेरे पास इतने ही पैसे हैं अभी यहाँ से चल के जाना पड़ेगा एंड देन हिज वाइफ गिव्स हिम सो मच Hmm. शिट कि Yeah, मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है ये नहीं है वो नहीं है एंड लाइक ओके. they could have done so much with it because that whole aspect of how his wife would humiliate him endlessly, Yeah. and because of which he felt so emasculated and he was so frustrated, but he couldn't ever take it out on his wife and he Yeah. would go take it out on other women. Hmm. I thought it was so good, but I don't think he So did it. does she survive at the end, or does he also end up killing No, her? the wife is there, but he kills Shraddha Kapoor, somebody else's girlfriend. Oh yeah, Yeah. Siddharth Malhotra. Yeah, Yeah. and then does she know that he's also a murderer at the end of the movie? Does she learn? The wife? Yeah. I don't think. I think they all die. I can't remember the ending. Yeah. No, Where he is died. it? Only He gets Siddharth killed. Kapoor He gets alive. killed in एक villain and then in एक villain returns क्योंकि obviously कोई मतलब वो legacy value नहीं था. They bring him back. So yeah, Legacy वाली नहीं था तो they bring him back. yeah. So there's all that. And एक villain had like the greatest villain of all time. KRK was in the film. Yes. Oh. Yeah. वो उसी फिल्म से तो आया है 2 rupees people. So that film has great legacy. Nice. Yeah. Yeah. We also need to Guys, talk sorry. about Yeah. Amjad Khan Yeah. as Gabbar Yes, Singh, that is what I guys. want to talk. That was number one on my list. Yeah. Amazing. Yes, it has to be number one, I guys. have a funny story, life Please tell story. us. So my mother used to be very she used to really like अगर मेरा मन नहीं करेगा participate करने का, she'll still push me to participate in all the competitions that happen in school. And when I was in class 3, she made me a dress out of different plastic bags and made me a plastic man. Mhm. And my dialogues were जो गब्बर बोलता है like 200 कोस दूर जब एक बच्चा सोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना प्लास्टिक मैन आ जाएगा. Oh. Like Sasta Gabbar. I played Sasta Gabbar once. But then yeah, Oh. that's when I won a prize, which was a book, and that was my first book ever. Oh, Like nice. a short. It was a collection, Panchtantra class. That's how I got into reading. Yeah.
ये थोड़ी ज्यादा लंबी क्लैप थी या बता या But yeah. हाँ. But yeah, on the topic of Gabbar, there's a book I would like to recommend. तो शोले की जो मेकिंग है उसके ऊपर एक किताब है written by अनुपमा चोपड़ा. तो I don't remember the exact name, but I think शोले the making ऐसी कुछ तो नाम है. या And it या has like the entire story of how the film was made, everything. तो उसमें एक छोटा section है where she talks about how Gabbar was casted, like how Amjad Khan was casted, because nobody wanted to cast him because nobody knew him at that point. And Yeah. everyone thought that his voice is weak. कि मतलब ऐसे उस टाइम पे सब बेस भारी बैरिटोन वाले सब विलेंस थे एंड एवरीवन थॉट कि नहीं होगा बट देन सलीम जावेद हैड कन्विक्शन कि ये आदमी करेगा एंड किया उन्होंने सो डू चेक दैट बुक आउट इट्स रियली गुड Yeah, there is another like super chat by Mishmish again. I think वो बाहर की recommendation है, so I'll come back to it again. But Vani, great story. Do we have photos of the plastic man which we can post on our Discord? Because हमने आपकी बहुत और सारी No. memes वाले channel के लिए अपने. I'll have I to ask have him. that photo of yours where Vani was a kid और किसी एक My like mother made me like half Hindu, half Muslim, and the dialogue was like Hindu हूँ मैं, मुसलमान हूँ, मैं बांटो मत मुझे, इंसान हूँ मैं. Like yeah, she'll and go वो extra अपने out for Discord all पे the है photo. costumes. It's a Yeah. great photo. My mother used to go all out with my costumes, and then when my brother's time came, she would just copy and paste them. ये होता बट है डिड ही थोड़ा. विन बट डिड ही विन But He did never you won. I win? always हाँ won. हाँ 'Cause हाँ. I'm the charm, yeah. बट गाइस एक अब मैं एक थोड़ी इंडी रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ. ये एक्चुअली मेरी बॉलीवुड की टॉप रिकमेंडेशन थी एंड इट्स फ्रॉम वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स. इट्स कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे एंड द कैरेक्टर आई वांट टू टॉक अबाउट इज टाइगर मेमन का रोल जिन्होंने प्ले किया है. दैट इज पवन मल्होत्रा. एंड पवन मल्होत्रा का fuck, where do I start from? Because like every scene he was in is exceptionally well. और ब्लैक फ्राइडे इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जहाँ पे कोई भी विलन नहीं है या सब विलन है, राइट? यू विल रूट फॉर द विलन. You would want the villain to do what they want to do. That's actually the beauty of like Black Friday, and that's what makes it so special. कि आपको कोई गलत ही नहीं लगेगा क्योंकि आपको सबकी बैक स्टोरी पता है और आपको पता है सबकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, तो आपको लगेगा यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. So it's that kind of a film, and Pawan Malhotra particularly stood out for me. So फिर जैसे जैसे फेमस हुए ना पवन मल्होत्रा, he was already famous, but फिर जैसे वो डॉन में आए, फिर तब्बड़ में आए, it's I like it just made me happy that he got his due because I think he's one of the best actors in India right now, and we have been utilizing him well. I loved him in this movie called Thappad. He played the father, I think. It's the same guy, no? थप्पड़ में Uh, वो थे क्या नहीं थप्पड़ No, में तो पूनम मिश्रा I think I'm getting wrong. Yeah, I'm sorry. got Yeah, Yeah. but no, yeah, you're right. आई थिंक हमने लाइक सीन फेवरेट सीन्स वाले में भी इसकी बात की थी बट yeah. द सीन वेयर टाइगर मेमन का ऑफिस जला देते हैं माइम में एंड वो गाड़ी चला के आते हैं एंड ही गेट्स आउट एंड ही चेक्स दी बर्न्ट ऑफिस एंड देन ही स्क्रीम्स कि अक्खा माइम जला दूंगा मैं. इट्स लाइक वन ऑफ दोस उन्होंने हॉन्टिंग इमेजेस की मतलब ऐसे सपने आते हैं वैसे. इट्स So मतलब द वे yeah. ही ड्राइव्स द कार उसी में दिखता भाई कितना गुस्सा है आदमी. सो And there's this scene in Black Friday जहाँ पे he's using a toothpick and he's हाँ talking to a guy जिसको बॉम्ब लगाने का काम दिया है, and he asks him कितने हिंदू मारे तूने, और फिर वो बताता है अच्छा अच्छा. And like वो जो उनके facial expressions आई आई के साथ वो जो खेल रहे होते हैं ब्रो, एक ऐसे एक डिंजी सा होटल रूम आपको दिखाया है, वो इम्तियाज अली का होटल डिसेंट टाइप, राइट? Yeah. उसमें बैठ के पूरी कन्वर्सेशन हो रही है. वेरी वेरी हैवी स्टफ. Hmm. So just Even watch Black Friday again for Yeah. Pawan Malhotra, guys. Yeah. Black Friday में there's also ACP Pradyuman के साथ कौन होता है? Yes, Daya, yes. the other guy, Abhijit. अभी His character, I felt very bad for his character. उसके I अभी मानिए think आपने आपको याद है बेस्ट सीन्स की अभी जो लिस्ट गई थी उसमें हमने उसका भी सीन डाला था. yeah. या बिकॉज द सीन व्हेन Whole- लाइक उसको बॉम्ब लगाने का एक्चुअली काम दिया जाता है Yeah. एंड देन दाऊद गोज टू दुबई Yeah. एंड देन इज लाइक व्हाट डू आई डू, और वो चक्कर काटे जा रहा है और चक्कर काटे जा रहा है. विच सॉन्ग कम्स तब? भरम बाप भरम भाप के भरम भाप के I भरम भाप loved. के. I really. I mean, he was a. I mean, I don't. Yeah, he was a villain only, of course. But then I Yeah. felt very, very bad for him. Our godfather Kushal is saying a villain who is a Mm. Nero in the end. Nasiruddin Shah in a Wednesday, a hero. Yeah.
तो So अभी नसीरुद्दीन शाह पे आ गए, तो ये मैंने एक और कैटेगरी बनाई थी, मैं जल्दी बोल देता हूँ. सो दिस इज अ कैटेगरी आई कॉल्ड सीरियस एक्टर्स हैविंग फन. तो इसमें मैंने रखा है नसीरुद्दीन शाह इन एक सेकंड, आई कैन हियर माय ओन वॉइस. ओके सॉरी. हाँ, नसीरुद्दीन शाह इन क्रिश. इफ यू गाइस रिमेंबर, ही वाज द विलन हाँ क्रिश. He was? What? ही वाज क्या, डॉक्टर आर्यना मैं कौन जो, सी क्रिश देख के आया हूँ? अरे जो उसको रोहित को बुलाता है सिंगापुर में कि तुम कंप्यूटर कोई बनाओ कोई मेरे कोई लिए. क्रिश 4 या क्रिश 5 आ गई क्या? अरे नहीं नहीं यार, क्रिश Wait, क्रिश I 1 में. can't. I honestly I haven't seen Krish per se, अरे but he comes to the camera and he says breaking news. मशहूर एक्टर, उसका वो रनिंग गैग होता है यार. अच्छा, क्रिश में होते हैं एंड सरफरोश, इफ यू गाइस रिमेंबर, जिसमें ही वाज द Obviously, yeah. गजल Sarfarosh. प्लेइंग सिंगर. तो वो काफी सही लगते हैं. एंड देयर इज अनदर एक्टर, गिरीश कर्नाड. गिरीश कर्नाड भी लाइक अनदर लाइक थिएटर लेजेंड वगैरह. देयर आर टू मूवीज जिसमें वो बहुत अच्छे विलन बने थे. एक इकबाल है, इकबाल मैं बचपन में देखी थी, बट लाइक ग्रेट इम्पैक्ट. एंड एक था टाइगर. एक था टाइगर इज लाइक ऐसे फुल टाइम पास कमर्शियल मूवी, बट he gives it so much, gravitas ki raw ka boss hai, and like he means it. And Salman Khan acts so well with him. Yeah. Like yeah, एक था टाइगर में थी यार चीजें कुछ कुछ अच्छी. So yeah. अमेजिंग रिकमेंडेशंस गाइस, एंड बहुत सारी लोगों की रिकमेंडेशंस आ रही हैं. एंड मेरी नजरें पहले उन पे जा रही हैं जिन पे सुपर चैट आई है. जस्ट सेइंग गाइस, दिस इज हाउ दिस वर्क्स. Yeah. कैपिटलिज्म का जमाना है. Yeah. सो लंगड़ा त्यागी की बात कर चुके हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट बोथ द त्यागीज, द हथौड़ा त्यागी एंड द Yeah. लंगड़ा त्यागी गाइस. सो Yeah. वी आर डन विद द त्यागीज. Yes. एंड कैन वी नाउ मूव आउटसाइड ऑफ इंडिया, या कोई चीज रह गई है जिसके बारे में आप लोग बात करना चाहते हैं? Can we also Uh, talk about the I haven't. Mojo Jojos and the yeah. yeah Yeah, let's talk about animated yeah. हाँ. villains. So Mojo हाँ. Jojo की भी बहुत सैड लाइफ थी यार. जब मेरे को पता Yeah. चला था उसके साथ हुआ क्या था, वो मोजो जोजो बना कैसे, एक एपिसोड में दिखाते हैं Mhm. how he got that brain. Yeah. उसके बाद Yeah. तो मेरा मतलब ऐसे हो गया यार, he can't be the villain. Yeah. इवन वो फिनियस एंड Doctor फोर्ड में जो वो Yeah. रहता है डॉक्टर डूफेंशमर्ट्स, उनका भी एक ऐसी ही मीम चलता रहता है कि डॉक्टर डूफेंशमर्ट्स जब उनका फ्लैशबैक दिखाया था, तो उनके बचपन में बर्थडे पे कोई नहीं आता था, लाइक ही वाज वेरी No, लोनली Yeah. टाइप्स. in the एंड meme, yeah, on his birth only, there's no one. yeah. Like in the first picture, on his Yeah. there is no one. Oh. Yeah, and then when he had his daughter, he made it a point to celebrate all her birthdays. So this was like ये meme है जो बार बार आता रहता है. So like great villain Dr. Doofenshmirtz. Yeah, Yeah. he is. He really is. Phoenix No, Abhishek is saying Coyote be the villain था ना. हाँ Yes. अरे. Yeah. पूरा पक्का villain यार. Yeah. So yeah, Mojo Jojo was one I wanted to talk about. और कोई ऐसे, अरे यार उसमें एक वो होता था, ऑसवर्ल्ड में एक विलेन होता था यार. Oh, he wasn't a Oswald में villain. कोई villain नहीं No, था. the penguin guy was all of us. हाँ, the penguin guy was all. वो स्क्रिप्ट yeah, करता था. हाँ. yeah. So this is not animated. Disha, can I still say it? आपने कहा था कि animated Yeah, yeah, करें yeah. या. No, yeah. We have to talk about it. We are talking about the greatest villains of all time. Can we please take some minutes to talk about Professor Snape? And Professor Snape पे एक पूरा stream dedicate हो सकता है, but जो character arc दिया गया है भाई, And the way Alan Rickman the has way played it. Oh man. मतलब जेके रोलिंग का राइटिंग इधर है, एलन रिकमैन इधर है. लाइक दैट्स द ग्रेविटास. दिस इज अगेन दैट कैटेगरी, सीरियस एक्टर्स हैविंग फन इन लाइक ऐसे रोल्स. So Alan Rickman also like again great ऐसे theater actor वगैरह, but people remember him for like Hans Landa, so not Hans Landa, अरे shit, Die Hard में उनका विलन का Hans Landa comments में बहुत आ रहा था. हाँ, मैं इसीलिए मेरा ध्यान उस पर चला गया. डाई हार्ड में उनका क्या नाम था वो बताओ. मैक ग्रूबर था आई थिंक. डाई हार्ड में जो विलन बने थे एंड इसमें स्नेप जो बने थे. ओ मैन. So yeah, मतलब there were a lot of villains in Harry Potter. मतलब Voldemort तो मेरे को basic लगता था. मतलब he is not like वो बंदी भी बहुत सही थी ना जो Bellatrix Lestrange. हाँ. Yeah, Voldemort like मेरे को उसका Tom Marvolo Riddle वाला अच्छा लगता था. Like the guy who is like who can go bad, right? जो पगड़ी पहनता था. नहीं, जो मतलब the kid who was just gaining a अच्छा, lot अच्छा. of knowledge and who हाँ. would like do bad things. I really like that, but I didn't like the final. Voldemort decent, like हाँ. 6 on 10 villain था. Voldemort, like finally when he came in, he was a disappointment. Yeah. वो मतलब ऐसे वो मेरे लिए White Walker वाली disappointment थी, because I think White Walkers के साथ सबसे बड़ी problem ये थी वो डरावने नहीं लगते थे, हाँ. right? Voldemort Voldemort सबसे was डरावना तब तक scary. लगता था जब उसकी बॉडी फुली फॉर्म नहीं हुई थी. याद है Goblet of Fire, और उसमें कि प्री Goblet of Fire तक जो भी हमने देखा है,
He's trying to come in a lot of forms. That was the Yeah. Voldemort I liked. And White Walk मतलब अगर अब we if we are entering that GOT rabbit hole, White Walkers का वही था यार, आपने इतना 8 सीजन से बिल्डअप दिया है, एक एपिसोड में पूरा आदमी आया, मर गया, खत्म हो गया, चाकू Yeah. मारा उसको, end. But So sadly, the designers of like the White Walkers and the designers जिन्होंने Last of Us में zombies बनाए हैं, hmm, they are the same, and they have hmm, done a fabulous yeah, fucking job in Last of Us. hmm, They have hit it out of the park in Last of Us. hmm. White Walkers से तो मैं बहुत खफा हूँ भाई, मतलब पूरा शो बर्बाद किया इन्होंने मेरे लिए. बट हाँ, गेम But ऑफ थ्रोन्स में अगर बात करनी है तो yes, रैमसी बोल्टन, sorry, I was yes. going to say something, but yeah, that word was for him. सो रैमसी बोल्टन ने दुनिया को बताया था कि अगर आपको पता है टॉर्चर क्या होता है, हम बताएंगे टॉर्चर क्या होता है. वो लोगों की नेल्स की जो स्किन होती है उसमें जाके ऐसे सुई चुभाता था. राइट, लाइक दिस इज हाउ यू यूज्ड टू टॉर्चर पीपल. सो जितना आप सोच सकते थे ना कि टॉर्चर ये होता है, वो उसको वन अप कर देते थे. सो एंड वानी आर यू ओके? या. And if we are talking about Game of Thrones, Tywin Lannister. मेरी अगर तुम 2016 से पहले की डीपीज देखोगे ना फेसबुक पे, मेरी जॉफरी की डीपी थी, मेरी जेमी लैनिस्टर की डीपी थी, मेरा लाइक फेसबुक कवर फोटो थी हेयर मी रोर हाउस लैनिस्टर. पता नहीं क्यों मेरे को किक मिलती थी इतनी लैनिस्टर्स. Beware of Vaibhav. Yeah, I just loved like, and my favorite was Tywin Lannister because the father who understood how like this works, the strategist. So yes, I really liked him. Do you guys have any other favorites in the Game of Thrones universe? हाँ, मतलब वही जॉफरी है, सर्सी लैनिस्टर, इतनी Cersei. सर्सी वाज आल्सो रियली गुड. देन डॉन वाला तो वो भूल गया स्टोरी लाइन, दैट इज नॉट वर्थ रिमेम्बरिंग आल्सो. अरे वो जो आंटी थी, वो जो Yeah, बुर्का पहन समझ के गया आती थी. yeah, the tell him that I did it. हाँ, दैट आंटी वो भी बहुत अच्छी थी. वो भी बहुत अच्छी आंटी थी. Yeah. Haunted. But now we have like up miscellaneous में आ गए guys. Now we are हाँ. doing shows, we are doing cartoons, we are doing everything. वानी दिशा बताइए. अगर आप समय लेंगे तो हमारे पास और भी लिस्ट है. एक विलन है जो मतलब मेरे लिस्ट में लास्ट बचा था, लाइक आई हैव स्पेशल मेंशंस लेफ्ट आल्सो, बट जो टॉप 5 थे उसमें था, एंड लाइक चैट में भी काफी बार आ गया, रामाधीर सिंह. लेट्स जस्ट गेट हिम आउट ऑफ द वे. Oh yes. रामाधीर सिंह वाज द स्मार्टेस्ट पर्सन एवर, एंड उसको With the फर्क नहीं पड़ता. Can you give us a little context? So context as in like who Ramadhir Singh was. अरे तुमसे ना हो पाएगा. From Gangs of Wasseypur. Yeah. I haven't seen Gangs of Wasseypur. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा गाइस जल्दी से आगे कर दो, लाइक नहीं तो कमेंट्स. This never happened. So basically, Gangs of Wasseypur is a story of 3 generations of a family who are fighting against one man called Ramadhir Singh. नहीं मत One करो day ये watch please. the movie. दिशा So yeah, Ramadhir Singh. What I like about him is that he's always so clean looking. He doesn't do the dirty stuff. Yeah, आराम good से one. दूर से बैठ के Yeah. Hmm. एंड देन उसको इतना बढ़िया वो सीन दिया था कि मतलब हम सिनेमा नहीं देखते क्योंकि जब तक अच्छा सॉरी उसकी बात नहीं करेंगे, बट या ग्रेट गाय, 10 on 10 would recommend. No, I find a lot of like he reminds me of vibes wise of Gus Fring. Yeah. Right? Because how like they don't get into the what is the mud. They don't do the dirty stuff themselves. And like they are very मतलब उनका सब कैलकुलेशन अंदर है, they don't let it come to the surface. And they don't raise their voice. Yeah, like even like towards the end when something happens to Ramadhir Singh, वो बस बैठ जाता है कुर्सी पे, he accepts whatever is happening to him. So वो काफी और उसमें भी ना वो इसका कैसे लुके कि बैठने दे यार एक बार मुझे. Like there is this whole part कि रुक यार, टॉयलेट सीट पे जाके बैठता है, अब चला गोली, हो गया मेरा, I've lived a decent enough life, अब मार ले मेरे को. Yeah, Gus Fring is like मतलब हमने जब ब्रेकिंग बैड नहीं सॉरी बेटर कॉल सॉल वाला स्ट्रीम किया मैं तब भी बोला था he is my favorite character from Breaking Bad universe. And अच्छा मतलब we'll discuss him just like this as if it's another Wednesday. Gus Fring के लिए तो थोड़ा बिल्डअप वगैरह आना चाहिए यार. ट्विटर पे मैंने कभी रिसेंटली वो देखा था, किसी का वो लॉस पॉलोस हरमानोस का एक वो अकाउंट है, उसमें लिखा था we are deeply saddened to announce the demise of our founder Gus Fring.
ऐसे Yeah. मतलब अच्छी सी फोटो डाली उन लोगों ने. So yeah. So yeah. So yeah. Are we doing Gus Fring? हाँ Let's हाँ. Yeah, so Gus Fring is the reason why I fell in love with the Breaking Bad universe. मेरे को हम्म. Walter White वगैरह सब ठीक ठीक लगते थे, but enters Gus Fring, right? हम्म. And the whole like ego game which was between Walter White and Gus Fring was what made the show for me. हम्म. And there was a time जब मेरे लिए Breaking Bad का season 4 best होता था, हम्म. because उसके बाद there is no Gus Fring, right? Yeah. So I was like कि okay, this is the way the show ends for me, and I was so angry, no, so happy and so satisfied and content with what had happened in season 4. मैंने season 5 बहुत टाइम तक नहीं देखा हम्म. था. हम्म. Gus Fring का के बारे में अगर आपको और जानना है, so they have given him a lot of depth in Better Call. Seen his like one of his last scenes in Better Call Saul in season 6, where so Gus Fring was gay, right? हम्म. So Gus Fring has this whole side where he wants to kind of have fun and like wants to maybe kind of loosen up. Yeah. But there is this scene where you get to see he goes to a bar, like he's talking to someone, and he's like, okay, like having a nice moment because he had achieved something in life. So he was taking out a moment for himself. But he's like, okay, now things are happening. Now something would happen. And there is this switch, and he's like, maybe not. And then हम्म. he goes back home again. Yeah. So uh, आई थिंक विलेंस जिस लेवल पे गस फ्रिंग ने सेट कर दिए वो आई थिंक मतलब बहुत रेयरली कभी लाइफ टाइम में मैच हो पाएंगे. एटलीस्ट मेरे को लगता है कि जब तक हम है हम्म. कि जितनी उस बंदे को डेप्थ दी है, एंड जो उसको जो सबसे पहले जो उसका जो मतलब जो फोरग्राउंड में आप देखते थे, ही वाज जस्ट अ मैनेजर ऑफ लाइक अ Yeah. प्लेस व्हिच सर्व चिकन, राइट? सो हम्म. जो उसका पहला सीन है जब वो पहली बार आता है, एंड हम्म. आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि दिस Yeah. मैनेजर इज द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम, एंड यू लाइक फक. Yeah. So yeah man, it's like too heavy, and like the way he does it is amazing. उनका नाम बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करना, so I wouldn't even हाँ, try. गियान कार्लो एस्पोजितो. तो अब उनका मतलब थोड़ा Yeah. ऐसा हो गया कि he's become like the Amrish Puri of like this Oh yeah, and generation. I'm hating it. Other people are bringing him in Yeah. as villain, and he तो shouldn't be doing तो this. मतलब एक थोड़ा वो है ना कि the second this guy shows up in any show, मैं like भाई अभी लगने वाला हाँ है मतलब remake का. don't take the Deepak Tijori route, guys. Yeah. This is not fun. Yeah. Yeah. Like he shows up in The Boys and I was genuinely excited कि यार अभी कुछ होगा मतलब एकदम कुछ आएगा एक्शन. बट लाइक बॉयज में तो होमलैंडर जो मेन बंदा है, यू गाइस यू हैवंट सीन ना होम द बॉयज. हाँ, बॉयज पे हम बात करेंगे कभी. एंड Boys इवन from सेम में मैंडलोरियन में जो एंट्री दी है उन लोगों ने गस फ्रिंग को, मतलब वो एक्टर को, इट इज सो गुड. वहां उन्होंने जस्टिस की कि लाइक हाँ भाई देयर समवन हैज एंटर्ड. सो या काफी इंटरेस्टिंग है उनका करियर. Yeah, and there are too many villains in this universe, but we'll come to this. We need to keep everyone engaged. So like हाँ. yeah, Really like Vani, these. Okay, Abhi, I've only watched until season 4 of Breaking Bad, and I haven't you watched have Falls you have also. finished season 4? Yeah, and I'm about to start the last season is the fifth one, right? Yeah, yeah. The last season is the fifth one. It came in two parts, so but you'll be watching it together. Yeah. Yeah, and I haven't watched Better Call Saul, so to hear that he's gay. No, but like it gets established in Breaking Bad only that he's gay. But बहुत subtle चीजों से. I thought he had a wife, he had kids. Yeah, yeah. He had a wife, so it's होता है ऐसे भी मतलब like Making sense, but it's also like mind blowing information. yeah, and they do nothing with that information. That's the beauty of it. कि Right. ही इज गे बट ठीक है यार, उसकी लाइफ है, वो अपनी चीजें कर रहा है, तो उस पर अलग से कभी ऐसे हाईलाइट नहीं आया. अगेन ही हैड अ बॉयफ्रेंड एंड स्टफ व्हिच इज अ वेरी important like plot of the whole two shows. But yeah, what do you think of Gus Fring, Disha? So what I love about the actor is that he has a very empty stare. Like you look at Yeah, him and you know there's not like there's no soul left in him whatsoever. And it oddly like you can also tell that once upon a time he was a very happy person and he was full of life, and now it's just dead. There's nothing back there, and he has nailed that look somehow. That is what I love. One of the things yeah, that Yeah. Yeah, and you see this look in one scene itself, and वहीं पे establish हो जाता है कि Gus Fring क्या है, yeah. which is when Walter White comes to meet him for the first time, and he doesn't let his guard down. वो बोलता है, I'm sorry, That, you have someone else mistaken for that's the me. scene I'm Yeah, talking about. yeah, It blew my mind जब मेरे को yeah, उसके बाद पता चला था he is Gus Fring. yeah, yeah. And his yeah. smile also is just Mm, so blank. yeah.
He Yeah, yeah, never like his face never betray, like his emotions never betray him. Yeah, Basically, he's very yeah. composed at all yeah. times. Dude, you are, And yeah, in for a ride. अगर आपको गस फ्रिंग पसंद आ रहा है ना, बेटर कॉल सॉल में जो डेप्थ आ जाएगी ना गस फ्रिंग के कैरेक्टर में. मैं Yeah, उसका कोई क्लिप चल रहा है इंस्टा पे जो Hmm. मैंने देखा था, जिसमें यही एक्टर वो Hmm. बोल रहे थे कि इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू वॉच बेटर कॉल सॉल फर्स्ट एंड देन ब्रेकिंग yeah, बैड yeah, yeah. You can and totally, his totally do character. it like that. Hmm. Yeah, but कर एक सकते हैं उनका इसको. गियान कार्लो का एक मीम है जिसमें वो ऐसे मतलब खुल के हंस रहे होते हैं, देन सडनली Yeah, and गोस suddenly, ये तो तुमने ही मूवी क्लब में कितनी बार शेयर किया है यार. वैसे I Yeah, 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 right. So, and on the topic of Gus Fring, we have to talk about Gus Fring's arch nemesis. वो जो बुड्ढा था जो व्हीलचेयर पे बैठा रहता था और डिंग 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 yeah, करता Oh man. my था. I god. fucking hated that guy. I'm very happy that whatever happened to him. And, Salamanca, right? yeah, Hector Salamanca, Hector worst Salamanca. person ever. How? Who's He's that? such a अच्छा. Again, like Hector Salamanca का भी आप पूरा आर्क देखोगे Better Call Saul में. So Disha, in Better Call Saul you'll get to see when he was not on the wheelchair. He was like a Yeah, proper Don Oh, now. when he was yeah, young. Yeah, when he yeah, was young and when he would do like Gus Fring kind of things. yeah. Right. And Wow. that was also the actor who was in the movie Pie, right? The जो Darren Aronofsky की जो I'm not पहली sure. मैं debut देखी film थी, नहीं है. Pie. So he's a great actor, and the way they used him with the ding 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 Yeah. is Fucking amazing. hated that guy. So, what नफरत है उस आदमी से. Yeah, So what I find really interesting is कि when these villains they choose revenge always, even in the time of death, तो वो जैसे Hmm. मरा ना और इसको लेके मरा, वो मुझे बहुत satisfying लगा. Yeah. तो yeah, मतलब yeah, he yeah. can't move and that is Hmm. what he's choosing, and I thought there was some kind of dignity in it. I might be wrong. Even Yeah. Ramadhir Singh, जैसे वो बैठ के फिर वो बोलता Yeah, है, yeah, yeah. I thought there was some type of dignity in that. And this is a very good analysis because some people at that stature they accept death. कि Hmm. तमीज से कर लो, ठीक है, Yeah. you Yeah. won this one, मार लो, तमीज से मारो. Yeah. मेरा एक ही बार मरूंगा देखो लाइफ में. हाँ. So ढंग से मारो मेरे को. इट्स ऑलमोस्ट जैसे वॉरियर्स का भी वो कोड होता था ना कि लाइक अगर मैं हार रहा हूँ तो देन आई वुड रादर डाई Yeah, देन yeah, yeah. लिव अ लूजर्स लाइफ. तो इट्स वो लाइक कि जब आप किसी के साथ गेम खेल रहे हो और उन्होंने गुड गेम नहीं बोला एंड में, तो मतलब पॉइंट क्या है, मतलब जी 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 तो बोलना बनता है जी भाई. जी. जी जी. हाँ. So yeah, we talked about the Gus Frings and the अभी इस यूनिवर्स में और भी है, but I want Vani to also participate. तो हम अभी और recommendations पे जाएंगे. Vani, in the realm of TV shows, do you want to talk about like more villains or like cartoons? कोई भी बता सकते हो. Then we'll come back I've to this. I've run out of villains. But Yeah, yeah, Hindol mentioned Homelander. I think that yeah, was an amazing character in The Yeah. Boys. But I don't yeah. think anybody else on the call has seen it. So I have seen the pilot episode, and my only reservation with the boys is every episode is 1 hour long. So I keep asking people, should I watch the boys? I'll ask the chat right now. Watch Do you it. guys think I Watch it. should watch the boys? Because I I haven't seen know the second season. बहुत ज़्यादा खून खराब हो गया था मेरे लिए. अरे अब देखो मैंने अब. सुना है बहुत खतरनाक है. It just keeps getting better, better. One of the many reasons I really like general rule of thumb. I am not rule of thumb, but like in general, I'm not able to watch a lot of खून खराबा वाली चीजें and a lot of Yeah. abusive Yeah. things as well. Yeah. I mean, But right now nobody does topical humor better than the boys. मतलब yeah, हर साल जो जो cringe चीजें हुई हैं दुनिया में उनको true. सबको वो ले आता है and they address it like in the best possible way. So Yeah, it's an amazing show, hands yeah. down. Yeah. Yeah. Arnav is saying happy movies देखो ना यार. Yeah. This Sorry is यार what अब I तो. realized this morning when I was making my list again. I realized I either like it's because of my memory or in general I don't watch a lot of movies that are very serious and I will देखो गाइस, बहुत हम पे वो आए जा रहे हैं एलिगेशंस कि हम सुपर चैट मिस कर रहे हैं. ओके, सो ये एक प्लीज रिन्यू दिशाहीन स्ट्रीम, ओनली हाइलाइट्स लैक फन. ओके, पॉइंट नोटेड. थैंक यू सो मच जयदीप भाई. देयर इज अनदर वन. This is by Devrat. Talking about anime, John Libert from Monster. I don't know about this. Hindal, Disha, I Vani, do you don't guys? know either, but thank you Devrat for recommending. Anime मेरा थोड़ा मतलब like I don't know how about you guys, but मैंने बहुत कम देखा है तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है. But I do know कि anime में बहुत अच्छे villains होते हैं. Like they Yeah, जैसे yeah.
अगर मैं थोड़ा सा मतलब इस पे एक 30 सेकंड बात कर लूँ तो Yeah. जो इनका सिनेमा वाली, अगर आप लोगों को चैनल पता है, Oh उनका yes. एक वीडियो ऐसे था ऑन द एनिमेटेड रामायण. उसमें उन्होंने मेंशन Oh. किया था दैट इन एनिमे दे ट्रीट देयर विलन्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज द विलन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीरो ट्रांसफॉर्मिंग, राइट. तो उसको वो लोग बहुत Hmm. मतलब तमीज से वो करते हैं. तो अगर आप याद रखोगे जो एनिमेटेड रामायण है उसमें भी जब रावण मरता है तो Yeah. इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू लाइक अ गार्डन एंड उसमें पूरा नया पेड़ वगैरह आता है. सो यू नो लाइफ एंड डेथ का वो साइकिल चल रहा है. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी This इंटरेस्टिंग इन all this एनिमे. information also is in the cinema wali Yeah, essay. it is Oh, from the video essay beautiful. itself. Yeah. Yeah. So do check I that remember video you essay. giving her a shout out recently. मेरे को Yeah, yeah, बड़ा अच्छा लगता है जब लोग एक दूसरे को ऐसे अच्छी बात yeah, है. And she's good. Like मेरे को yeah, पता yeah, है. I haven't spoken to her ever, but I know she's very much there in the industry and she's doing great. yeah, So big shout out to Cinema Wali. yeah. Yes. And a lot more things. So Hindol आप कुछ और याद कर रहे थे? नहीं यार नहीं नहीं मेरी मतलब इट्स ओके. एक्चुअली. हाँ नहीं हाँ, मेरे को लगा मैंने आपको काट दिया इसलिए पूछा था. हाँ, बट या सो देयर वाज दिस वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट की जो नर्स है जेक हाँ. डेव. या शी वाज आल्सो देयर. And you know, there's this movie when Viswapati Sarkar had come on the channel, he had first recommended Misery. Misery में हम्म, क्या होता है एक वानी, do you know about this? So you No. would love it. So there is this fan और एक बंदी होती है वो एक ऑथर की फैन होती है. So वो उस ऑथर को किडनैप कर लेती है Oh. and she wants him to finish the book and but she's a psychopath and so she starts hurting him and she has no intentions of like ever letting him go. yeah. She's a, it's a great fucking film. आई थिंक जो स्कॉर्सेसी की वो वाली फिल्म थी किंग ऑफ कॉमेडी, वो भी थोड़ी ऐसी ही है कि हाँ. रॉबर्ट डिनीरो एक ऐसे मतलब अपकमिंग कॉमेडियन होता है एंड ही थिंक्स दैट ही इज रियली फनी बट ही इज नॉट. तो एक मतलब टॉप कॉमेडियन होता है, उनको किडनैप कर लेता है एंड ही इज लाइक कि अब तुम्हारे शो पे तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा एंड आई विल डू द शो. तो Hmm. वो पूरा तो जोकर जो है टॉड फिलिप्स वाली, इट ओज अ लॉट टू किंग ऑफ कॉमेडी. लाइक आप देखोगे तो काफी सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी. सो Yes. So now that you mentioned Joker, let's choose one Joker each, guys. कौन से आप जोकर के साथ जाना चाहेंगे? टॉड फिलिप्स के जोकर या क्रिस्टोफर नोलन के जोकर? लोगों के नाम भी बोलते हैं, हीथ लेजर और वाकिन फीनिक्स. वानी? I was going to pick an animated Joker, but okay. ओह नो नहीं नो बट लाइक वो भी अच्छी चॉइस है. हाँ हाँ. वो भी अच्छी चीज. I don't remember the name of the Joker, but it's a two-part movie. Just the daughter of the inspector, she kind of gets paralyzed from down below, um, because the Joker is extremely, extremely wicked. I think it's Halloween, the late Halloween or something. So there are two parts of the movie. That was very. I, that Joker was really, Yeah. really. Which is closely followed by Akshay Kumar Joker, Nani Koro. We have a winner, guys. So we are not choosing between Heath Ledger and like. बट लाइक अगर आप इवन इफ यू आर रिमोटली इनटू वीडियो गेम्स, मैंने बहुत कम गेम्स खेले लाइफ में बट दिस इज वन गेम आई वुड रिकमेंड, आर्कम असाइलम. अगर आप लोगों ने नहीं खेला है, Oh, यू आर Oh. मिसिंग आउट yeah. ऑन अ In लॉट fact, ऑफ. the It, movie, there's a movie also about it. आई हैवंट yeah. सीन द There's an मूवी बट So animated movie also. Tayyab and Zaki both talk a lot about या like Arkham. बहुत या ही ज़्यादा like या. obsessed है. Yeah. I think DC ka animated verse is very underrated. Um, I mean, Marvel animations are like not animations. Animated universe is हाँ. not so good, but या. DC ka they've cracked it really, really well. I like each and every movie that comes out. I wait for it to come out. बट मार्वल में दिस वन द स्पाइडरमैन जो स्पाइडर वर्स वाली Yeah, Yeah, वो मूवीज है. तो that was yeah. nice. That was amazing. Untouchable है जो जिस हाँ. लेवल की एनिमेशन है उसमें. या. So yeah, but like again, let's come back to the villains, guys. Villains, Joker, Out Joker. of अच्छा हाँ. spite. ऑन द जोकर टॉपिक में, क्योंकि आई कैन कवर अनदर विलन थ्रू Yeah. दिस. किसी ने चैट में लिखा है, अली तुर्क ने लिखा है, मार्क हैमिल इज द वॉइस एक्टर फॉर जोकर इन द एनिमे मूवी दैट Oh, यू. nice. मार्क हैमिल इज द गाय हु प्लेड Oh, लूक स्काईवॉकर. तो अब अगर लूक yeah. स्काईवॉकर की बात हो गई है, सो यू हैव टू टॉक अबाउट डार्थ वेडर हु इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट विलन्स ऑफ ऑल टाइम. Oh, so I was seeing some lists like while I was researching for this ना या. कि the greatest villains of all time. मैंने दो लिस्ट में देखा, वन पे डार्थ वेडर है. 50 इट्स 50 100 नामों की है. डार्थ वेडर मतलब एक मतलब वो था ना कि एक आदमी की आवाज एक इंसान को क्या बना सकती है. सो शिट यार, इसी टाइम पे नाम भूलना था. सो देयर इज अ पर्सन, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, चैट में प्लीज बता दीजिए. उन्होंने मुफासा की भी आवाज दी है लायन किंग में. ही Oh, वॉइस्ड right. डार्थ वेडर एंड जस्ट थ्रू द पावर ऑफ हिज वॉइस ही मेड दैट गाय सो कन्विंसिंग एज अ विलन. एंड इतने लाइक टॉप
ये, and which is why Empire Strikes Back जो फिफ्थ फिल्म है स्टार वॉर्स की, इट्स लाइक द बेस्ट सीक्वल ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि उसमें एक ट्विस्ट है जो उन लोगों ने ब्रह्मास्त्र में कॉपी कर लिया, बट ओके, नेवर माइंड. Yeah. So let's also like एक बार like give our like due respect to Heath Ledger के जो जोकर थे, मतलब उन्होंने again like वो जो कुछ benchmark performances होती हैं कि यार this is the new benchmark, right? Like so जैसे Gus Fring हम टीवी में बात कर रहे थे, movies में I think it's Heath Ledger जोकर at least for me. और जो उनका जो सीन है, इंटेरोगेशन सीन है विद द बैटमैन, जहाँ पे वो, so you know we once put out a question on Instagram, which villain actually had a point, right? As a villain there are so many villains जिनकी अगर आप बात सुनो ना आपको लगेगा फक बंदा बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है, और अगर जब हीथ लेजर वाले जोकर की बात सुनोगे ना, so कि जो उनका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेकर बहुत ज्यादा शानदार था वो. And similarly I also saw this pattern in the villain of like Batman Begins. उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, टेकन वाले एक्टर का क्या नाम है, सॉरी मेरे को भी एकदम, हाँ लायम नीसन ने जो रोल प्ले किया है जिनका, कोई उनका प्लीज चैट में नाम बता दो उन विलेन का. डूड वो सोसाइटी में बैलेंस लाने के लिए काफी थानोस लाइक उनकी फिलॉसफी थी, but when you heard him say it, it made so much sense. So a very good remark of a good villain is, did he have a point? Like why is he doing it? कि ठीक है उनकी लाइफ में किसी के माँ बेटे किसी को मार दिया, दैट इज वन, बट अगर वो कुछ एक बहुत लॉन्ग रन में सोसाइटी लेवल पे कुछ देख पा रहे हैं, इट लाइक एक्चुअली मेक सो मच सेंस. थैंक यू सो मच रोहन, उनका नाम था रा अल गुल, बैड प्रोनाउंसिएशन बट या, सो रास अल गुल या रा अल गुल, क्या सही फिलॉसफी थी. सो द समटाइम्स द फिलॉसफीज ऑफ विलेन्स आर सो ब्यूटीफुल, like then you kind of fall in love with them the way Disha fell in love with Kamalika, no? So मतलब वो बहुत easy हो जाता है. Yeah. But I do want to know more about villains that just don't have a redemption arc. In like, there's no philosophy. They're just evil for the sake of it. Yeah. Yeah, even those guys are like completely. They are called psychopaths. जैसे मेरे दिमाग में पहला माइंड हंटर ही आया. इसका मतलब मैं देसी एग्जांपल देता हूँ, वेरी लिटिल स्क्रीन टाइम बट मोस्ट इफेक्टिव, बॉब बिस्वास फ्रॉम कहानी. उसका कोई रीजन नहीं था कि व्हाई ही वाज लाइक दैट, क्यों था ऐसे, नहीं था. वो आदमी आता था, मर्डर करता था, चला Yeah. Yeah. They were very. I want to empathize with you. Yeah. या अगेन बहुत सारे और नाम आ रहे हैं. एंड हिंडोल ने मेरे को पहले ही बोल दिया था, सर मेरी सुबह की फ्लाइट है. हिंडोल कल हमसे ही मिलने आ रहे हैं, सो लाइक इनको आज जल्दी सुलाना जरूरी है, फ्लाइट में सो गई तो दिक्कत हो जाएगी. बट यस गाइस, एक बार सब अपनी लिस्ट वापस देख लीजिए. वानी एंड I हिंडोल, wanted to mention somebody out of spite. That's just because it's a very. हमने इतने ज़्यादा villains की बात कर दी who've gone here, but I want to talk about certain someone who's very ऐसे, मतलब इतना वो बिग डील नहीं है. But like दिल धड़कने दो में the mother-in-law of Priyanka Chopra. I hated her. Yeah. You know, that reminds me of the mother from Sharp Objects. I did not want to talk about her. She was on my list and I was like, इसके बारे में बात ही नहीं कर रही. वाली is like really यार पतली गली से निकल जाओ, टच ही नहीं करना. It's So ridiculous. I am reading about like Proust right now. Again, I don't know if you pronounce it like that. जो Proust, one of the greatest writers of all time, Alan de Botton ने उनकी किताब लिखी है. Proust की माँ वो चीज करती थी जो Sharp Objects में होता है, कि आप अपने बच्चे को बीमार कर रहे हो so that आप उसको ठीक कर पाओ, and so that like the kid like falls in love with you, कि this person is my only protector. And मैंने देखा ये Proust की लाइफ में actually होता था. This is one of the most important plots of Sharp Objects also, कि the mother making you ill so that you feel that she can only save you. And I'm like, fuck, this is a very real thing. So Sharp Objects तो बहुत ही ज़्यादा dark है. The problem with mother was not only that she wanted to be the sole protector, but she also wanted constant sympathy and admiration from people. The thing was, if I'm not wrong, in that show they show that even she was a victim of that from her mother as well. Yes. Is she a villain or is she a victim? She is a villain यार, like इसको तो मैं माफ नहीं कर सकता, मतलब After some time, you actually have the sense to take your own decisions. The choice makes the man. I don't know कौन सी फिल्म का dialogue है, but Primary caregiver, that relationship is so messed up. Do you have the space to make your own decisions? Yeah, no, but Disha is asking
दिशा जैसे बचपन में क्वेश्चन पूछते थे अभी पूछ रहे, दिस इज नाइस, अच्छी बात है, पूछना चाहिए कि आर दे रियली द विलन, Yeah. राइट. एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मैंने एक विलन, आई एम सो सरप्राइज हाउ आई डिड नॉट राइट अबाउट इट, जिम मोरियार्टी फ्रॉम शर्लॉक, and particularly the one played by Andrew Scott, our like hot priest. Yeah. And again, it used to be my cover photo, Jim Moriarty की. And I remembered every, मेरे को ना ऐसे मैं प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ उनके डायलॉग्स बोलता था. इन सीजन 1 एपिसोड 3 जब पहली बार शर्लॉक आता, लाइक जिम आते हैं, and he first plays the role of a gay man, but he comes and then he says कि people die, that's what they always do. और फिर वो staying alive बज रहा होता है. Jim Moriarty is fucking amazing, man. And it deserves a stream of its own. Andrew Scott deserves a stream of his own. तो उस पर एक अलग से हमें करना चाहिए. कोई guys Jim Moriarty पे pointers? Yeah. So have you guys seen the Sherlock वाला movie, Sherlock Holmes? I haven't seen. उसमें कौन थे Jim Moriarty? Because I haven't like. I don't I remember. I don't just remember. It remember was not a कि very memorable performance because it came towards the end, and वो उन्होंने बहुत सस्ते में निपटा दिया था. Yeah. But like our like Sherlock wale was amazing. And yeah, so I'm glad I like couldn't हम. remember this. Shit. Okay, Jake Dev, thank you so much. Please इनका chat highlight कर दीजिए. Yeah. The teacher from Whiplash. मतलब I don't know if you would count him as a villain or not, but he was needs to just be talked about. spiteful. Yeah. So it's a, ये हिंडोल आपके साथ मेरा डिस्कशन हुआ था, क्या हुआ था, you can get to know a lot about a person if you kind of ask them कि जो उसमें टीचर और जो स्टूडेंट रिलेशनशिप था, was that healthy Yeah. or unhealthy. Yeah. So it reveals a lot about the person कि वो लाइफ को कैसे देखते हैं. Yeah. And I don't know कि if it has a right answer. Yeah. Right. So yeah, this is such a good one, Jake. Thank you so much for like pointing this out. And do you guys have like more recommendations? Please ऐसे जाओ, मेरे पास अभी बहुत सारी बची हैं. मेरे पास भी बहुत सारी, मतलब मैं ऐसे दर 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 करके बोल सकता हूँ, कर सकते हो. बट फ्लाइट आप ही को पकड़नी है तो आप तो पक्का कर लो. हाँ. एक नाम है जो बहुत टाइम से चैट में आ रहा है, विच इज एंटोन, उनका मेरे को सरनेम पता नहीं कैसे बोलते हैं, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन वाले जो हमें बर्दन थे, दैट मतलब वो तो मतलब ऐसे टॉप ऑल टाइम्स विलन वाले इसमें आते हैं. सो या सो प्लीज सर हावियर बार्डम की मैंने 3 पिक्चरें लिखी हैं. आई एम जस्ट चेकिंग. वन इज द वन यू मेंशन्ड, नो कंट्री, एंड देन ही हैज दिस सीन इन स्काईफॉल, जो वन टेक शॉट है, वो दूर से आ रहे हैं और वो एक रैट वाली एनालॉजी दे रहे हैं कि, एंड देयर आर, बाय द वे दिस इज अ थ्योरी आई हैव, देयर आर अ लॉट ऑफ पैरेलल्स बिटवीन स्काईफॉल एंड पठान. कि स्काईफॉल में जो होता था कि पहले वो जिसके साथ काम करते थे, जो उनका मेन एजेंट होता था, वही मेन विलेन बन गया. सो पठान में भी काफी ज्यादा थ्रेड्स हैं. So Javier Bardem again has that face, like again like he can pull this off very easily. And No Country for Old Men में जब वो शॉपकीपर को डराने आते हैं, right, like when you don't know whether he'll pull the trigger or not. So yeah, Javier Bardem को मतलब नसीरुद्दीन शाह के जैसे हम ऐसे प्रॉपर सेगमेंट्स करते हैं ना, उन पे करना बहुत जरूरी है. He deserves that respect. So we must give it. You mentioned 2 movies, एक और है क्या? पता नहीं मैंने. I think there is another James Bond movie that I had written. फिर हम मैड मिकल्सन जोन में चले जाएंगे, which is Casino Royale. So Casino Royale के भी जो विलन थे, extremely strong villain, मैड्स मिकल्सन, जिनको आप हैनिबल के नाम से भी जानते हैं, जिनको आपने अभी अनदर राउंड में भी देखा होगा, जिनको आपने दी हंट में भी देखा होगा. एंड मेरे को याद है जब वो पोकर खेल रहे थे एक सीन में, उनकी आंख में से खून निकलता है, राइट, लेकिन बिकॉज ही गेट्स सो स्ट्रेस्ड एंड लाइक कुछ तो उनका आई का इशू था. एंड द टॉर्चर सीन्स आल्सो ऑफ लाइक कैसीनो रॉयल वर वेरी यूनिक, कि मतलब कैसे पेन वगैरह वाली चीजें दिखाई गई थी. सो अगेन अ वेरी, आपको देखते ही ऐसे डर लग जाता है कि यार ये बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है. ही स्पीक्स वेरी लेस बट यू आर ऑलवेज स्कैर्ड कि शिट इज अबाउट टू गो रॉन्ग. सो मैड मिकल्सन के बारे में भी मैं बात करना चाहता था. एंड ऑन द टॉपिक ऑफ हैनिबल, मैं ओजी हैनिबल की बात करना चाहता हूँ, जो एंथनी हॉपकिंस इन साइलेंस ऑफ द लैम्स. मतलब इवेंचुअली इफ यू थिंक अबाउट द मूवी, ही इज नॉट द मेन विलन, बट
उनका है यार, like he is there. I think he has the record for winning an Oscar for the shortest performance. He is barely there in the film, but उनका impact इतना solid है. Yeah, So yeah, yeah. संघर्ष जो आप बता रही थी वानी is a remake of Silence of the Lambs. तो मैं कोविड के टाइम पे ये वाले बहुत किए थे, ओरिजिनल मूवी देखो फिर रीमेक देखो वापस, like कंपेयर करने के लिए. Yeah. तो Nice. वो था. तो एंथनी हॉपकिंस ग्रेट, Wow. जेन्युइन मतलब. एंड ऑल्सो Yeah. एंथनी हॉपकिंस, अगर आपके पास है टिकटॉक, प्लीज फॉलो हिम ऑन टिकटॉक. बहुत बढ़िया टिकटॉक्स बनाते हो. नहीं, एंथनी हॉपकिंस की बेटी है ना उस पे. आई डोंट नो, मतलब ही इज देयर ऑन दोस वीडियोस. तो वो एंड काफी. एंथनी हॉपकिंस आल्सो पेंट्स अ लॉट. या सो वो एक कभी पेंट. कभी बस अपनी ऐसे वीडियोस डाल देते हैं वेर ही इज जस्ट पेंटिंग. जिस दिन वो ऑस्कर जीते तो आके अपनी पेंटिंग दिखा रहे हैं, भाई ऑस्कर क्या मेरी पेंटिंग देखो. सो है उनका कुछ तो मस्त सीन. Yeah. And Disha and I had the same recommendation in our list. Amy Dunn from Gone Girl. Am I pronouncing it right? Yeah. Yeah. So, but I don't consider her to be a villain. I don't know. हाँ, I think मैं I एंटी हीरो yeah. मानूंगा उनको. Anti-hero है. She is not I a mean, villain, towards but the end of the movie, we were just like, she's okay. हाँ हाँ, गुड. मतलब I wasn't thinking that she was okay, but like क्योंकि उसने एक बंदे को बेड में ऐसे काट पीट दिया था. Remember that scene जहाँ पे उसका गला, नील पैट्रिक हैरिस का गला काट. So funny, I didn't go like she's okay. I didn't remember that scene. I'm sorry. I had conveniently pushed it out of my mind. Yeah. So yeah, Who Gone is Girl के बारे में दिशा. playing villains though? There's another film called I Care a Lot, जिसपे भी वो थी, हाँ, and she was yeah. so good in that. Yeah, it's almost like that. The Gone Girl character, what, like if she was Yeah. older in life, it's very good. I Care a Lot, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने उसमें. Yeah. Yeah. There is a taboo topic जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए. He was me too, but he is actually a very good actor. तो एक बार mention कर देते हैं उनके characters के बारे में. Art versus artist हम बाद में करते रहेंगे. Kevin Spacey ने as a villain काफी मचाया है जीवन में. So Seven And हो जीवन या में you and multiple ways मचाया उन लोगों ने as a villain, but yeah. I'm saying like in real life also, but yeah. Okay. Correct. I'll just conveniently ignore it the way Vani ignored like Gone Girl के कुछ parts. Yeah. So yeah, the usual suspects. Seven, and in some ways House of Cards House of also, Cards but also, वो yes, yes. anti-hero है mostly लेकिन. No, I Yeah. think after like I had the Season 2 privilege episode of 1. no, I had the privilege of watching the later seasons also. तो जहाँ पे Claire Underwood थोड़ा मतलब main हो जाती है and Frank becomes like थोड़ा sidelined because which they had to. तो वहाँ थोड़ा वो बन गया था villain, like he had like that proper fall from grace arc. तो I think we can consider him as a villain. ठीक है. And yeah. And yeah, the Seven में जो उनका सीन है, Seven पे एक बहुत अच्छा एवरी फ्रेम ऑफ पेंटिंग का वीडियो है कि डेविड फिंचर एंड द अदर वे इज रॉन्ग. And the other way is wrong, yeah. Yeah, it's if you want to become a filmmaker and if you have remotely anything to do with films, it is one of the first videos that you have to watch. और वो 10 वीडियोस उस चैनल पे सब जाके देख लो और you'll be वो very film very school है, confident. वो वो channel film मतलब school है आपको अपना उसका genuinely film school नहीं जाना पड़ेगा. हाँ. A lot of people believe that. Yeah. So उस वीडियो में there is this part जहाँ पे वो दिखाया था कि how David Fincher uses a lot of lockdown shots tripod पे लेता है. So जब Brad Pitt is asking what's in the box, you see these like shaky frames, but Kevin Spacey का character like rock solid. Yeah. And he's like कि ऐसे वो टकला बैठा है लेकिन his orange suit and like he's saying कि चल ऐसा भी है वो है. He's just not revealing what is in the box. So very very scary. Usual Suspects में जब वो लास्ट में सिगरेट जलाता है, Yeah. again बहुत ज्यादा वो भी खतरनाक था. So एक और फिल्म थी मतलब जो मुझे अच्छी लगती थी एक टाइम पे, but now it's like very problematic, which is American Beauty. I don't know if you will call him a villain in that film. Oh, but, I never thought of it from villain perspective. Yeah, but he had an interesting character nonetheless in that film. तो वो भी काफी अच्छी फिल्म थी, मतलब Yeah. थी उस टाइम पे. Even I think Baby Driver में भी तो villain नहीं है ना, मतलब in a way he is the main boss. तो वो भी था. Yeah. So yeah, guys, और recommendations बताओ. एक बार चार्ट में देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है. नहीं मेरे पास बहुत है तो अभी चार्ट अच्छा. आप देखते रहो, but अच्छा, like ठीक है, एक सेकंड मैं ना फटाफट अपनी लिस्ट कंप्लीट कर देता हूँ
जो हाँ हमारे इसलिए पास है। मैं कह रहा था, हाँ फिर हम चैट भी देखेंगे हाँ, या। दिस और इज प्लीज गैस स्ट्रीम लाइक करते रहो, देखो हम कितनी सारी प्रिपरेशन करके हाँ। आए थे आज। सो अभी मैं विलन स्पीड रन करने वाला हूँ, आपके पास कोई थॉट्स है? आई विल वेट फॉर 10 seconds, यू कैन से थॉट एंड देन आई विल मूव ऑन। ओके, स्पेशल थॉट। मेंशंस। हाँ हाँ, फर्स्ट आप रौफ लाला फ्रॉम अग्निपथ, ऋषि कपूर ने जो प्ले किया था बहुत बढ़िया प्ले किया था। बॉब विश्वास Oh. मैंने बोल दिया। गोविंदा इन किल दिल, दिस इज लाइक अ स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर दैट आई हैव बिकॉज बहुत अच्छा रोल था। प्लीज वॉच किल दिल इफ यू हैवंट। एंड इसमें दिखता है कि एक विलन हो के भी आप इतना अच्छा लाइक यूज योर प्रेजेंस इन अ सॉन्ग, तो काफी अच्छा था वो। इरफान एंड हासिल, वो मैंने मेंशन किया था। जॉन इब्राहिम इन धूम 1, ग्रेट ग्रेट विलन। ओ यस, वेरी फिर गुड। नवाजुद्दीन सिद्दीकीन किक एंड रईस में दोनों फिल्म रखी है। सो Hmm. इट्स लाइक इट्स आल्सो द सीरियस एक्टर हैविंग फन इन अ कमर्शियल मूवी कैटेगरी, वो है। फिर विजय सेतुपति इन मास्टर एंड विक्रम वेदा, दोनों में बहुत बढ़िया काम किया। Yeah. एंड ऑल्सो विक्रम टू एन एक्सटेंट, बट विक्रम में थोड़ा ये हो गया था। बट तबू तबू इन अंधाधुन, great villain. And Amitabh Bachchan in Mohabbatein, great villain. This is another villain who had a point, who genuinely had a point. या I ही don't हैड अ see पॉइंट। him as villain, to be very honest. या एंटी हीरो बट लाइक अ हाँ, वेरी रियल पॉइंट। yeah. वर So देयर एनी विलेन्स इन बागबान? the All parent, the kids. the kids Oh are no, the not villain. the parents, bro, the kids. हिंडोल क्या कर रहे I think हो? both of them, both the parties. Yeah. गलती दोनों Yeah. की है। गलती हमेशा दोनों की होती Yeah. है हाँ। Have you And noticed the good guy always is into puja in Bollywood movies? used to be, मतलब हाँ, Yeah, still used to is. be. Yeah. पूजा भट्ट कौन? बैंड वाला। या Yeah. कम ऑन। So yeah. And Irfan Awasthi father from Tare Zameen Par. अरे Oh. आई बम्ड इनटू हिम एट ब्लूटो का ही, अभी उनके साथ एपिसोड करने वाले हैं हम। वो मस्त बैठ के कॉफी Take पी it रहे back. थे। हाँ। Yeah. Take it back. Episode होने वाला है. नहीं यार, नहीं हम anyway दिखा I रहे थे। can't go to Bluto का anymore, so it's fine. Yeah. Hindol is too famous for Pluto kind of. But हाँ yeah, amazing speed run guys. बहुत सारी recommendations आ रही हैं। Like I said, capitalistic ज़माना है, super chat दोगे तो मैं जल्दी से पढ़ दूंगा क्योंकि हमारे पास खुद भी बहुत recommendations हैं. So Vani, Disha, do you guys want to add anything? Do you guys have any essay on the top of your head recommendations? No. Even I can do the same thing as Hindol, but मैं Yeah. कुछ logic नहीं बताऊंगी. हाँ I'll हाँ just हाँ. go for through. it, go for it. Yeah, so I've written down Patricia Arquette from Severance. I've written Yes. down Missy Armitage, Get Out. I don't remember her last name. फिर इसका लियो का जो कैरेक्टर है इससे Django Unchained. Hans Hmm. Nate Jacobs and Laurie from Euphoria. Um, I know कि किसी ने Orange is the New Black नहीं देखी ना यार? मैंने नहीं No, देखा ना। I haven't अच्छा, seen. उसमें everyone is basically everyone is a criminal, so everyone is very flawed. There's someone called Manny Montana from Good Girls. He's just really hot. That's why he's my favorite villain. There's Ranjit from all those old movies. He just has Oh. this treacherous look. Yeah. Yeah. He gives me a lot of anxiety. You know what? I really wanted to mention him, but I just couldn't remember any movie. I just remembered seeing him as a kid and being very scared of that character he played. Every character he played. Yeah. आई डोंट नो, कहीं तो ये था कि उन्होंने किसी तो इंटरव्यू में बोला था कि उनकी इमेज इतनी बन गई थी ना कि ये आदमी मतलब घटिया आदमी है एंड लाइक हमेशा गंदे काम करता है। उनको घर नहीं दे रहा था कोई बॉम्बे में कि सर आप तो मतलब आपका अंडरग्राउंड अड्डा है, आप तो मतलब क्राइम वाइम करते हो, आप थोड़ी रहोगे हमारी बिल्डिंग। एंड आई लाइक यार नहीं नहीं यार, मैं लेजिट आदमी हूँ, प्लीज। Then we have Billy Hargrove from Stranger Things, Miranda Priestley from Devil Wears Prada, or Soham Shah from Tumbar. Yeah, so Devil's Wear Prada का मेरे को भी आया था थॉट, I'm like again anti hero or a villain, तो मैं I इस think वजह he से just was a very bad boss. yeah, दिस but इज like the Meryl again like Streep but she character, had a right? point वाला जो था ना, she had a She never point had a वाला जो, point. She just was a very shitty boss. Yeah, that's This is it. what I felt. There's this whole narrative going around on Instagram now that the real villain was her boyfriend Andy and not Meryl Streep ka character because he was the one getting in the way Yeah. of her pursuing her career to her hearts.
There's content. this episode of The Office where वो दिखा रहे थे कि Michael Robert Scott, California from The Office. Sorry. हाँ हाँ, he's also in it. So Michael Scott ऐसे Netflix पे मूवीज देखता है ऑफिस में, Yeah, I जब डीवीडी पे remember. आती थी उस पे डेविल वेयर प्राडा देख रहा होता है. So he imbibes Meryl Streep's personality and he Yeah, starts treating Pam like that. Then next day he comes back and he's like, I finished the movie, I would like to apologize to you. I should not have yeah. done all those things. And then he's like, now he's watching this, so he's going to kill me now. Yeah, yeah, $1 million baby देख लो Million तुम. dollar baby देखने वाला तो. Yeah. Yeah. Desha, do you have more? No, I'm done. No, but these are some good recommendations, and yeah. So, can I like go like ahead with my Go for your recommendations speed now? run. Don't have a speed run, guys, so bear with me because though in my बहुत important है. In fact, I had been should I reveal? Okay, so I had been thinking of actually जो मैंने आप लोगों को बोला कि आज बेस्ट विलन्स पे स्ट्रीम करते हैं, मैं मेरा खुद का अलग से वीडियो बनाना चाहता था, माय टॉप 10 फेवरेट विलन्स ऑफ ऑल टाइम. एंड आई थॉट कि मैं उस पे नंबर 2 पे रखूंगा गस फ्रिंग को. एंड देन एवरीवन विल बी लाइक व्हाट, नंबर 1 पे कौन है? And I want to talk about who would have been on number 1 on that list. Isliye I didn't want to do a speed run on this because this is very important for me. Um, Again, I was late to the party by 5-6 years, but I saw Mr. Robot last year. Mr. Robot ke jo central villain and the key villain hai. There are two villains in Mr. Robot. One is an anti-hero, one is a villain. White Rose. So White Rose is someone जो मेरे लिए simply just very quickly became my favorite villain. एंड अभी मेरा आफ्टर टेस्ट बहुत स्ट्रांग है. हो सकता है मैं 2 साल बाद ये लिस्ट बनाऊं तो शायद चेंज हो जाए कि हो सकता है गस फ्रिंग टेक्स ओवर और लालो सालामैंका टेक्स ओवर. बट राइट नाउ आई एम very amazed with I still remember the first time jab Mr. Robot meets White Rose, right? And so White Rose has this thing, उनकी जो करेंसी है वो टाइम होती है. सो एवरी टाइम 1 मिनट पास होता है उनकी क्लॉक पे बीप बीप होता है, राइट? एंड ये आप स्मॉल नजेस देते हो ना एक कैरेक्टर को, so say you kind of remember everything about them. So and there is this scene where you kind of get to see White Rose get vulnerable also towards the end of the show. There is a lot to like kind of unwrap here, so मैं अभी इतनी नहीं बात करना चाहूँगा, थोड़ा self indulgent या थोड़ा niche हो जाएगा वो, but White Rose is one. Then there is another character जिनका मैंने movie club में अभी एक scene डाला था, Philip Price. Philip Price has a scene, so you guys go on YouTube and type Mr. Robot most powerful person in the room. So Philip Price is a person who can like do things which an emotional person can't do very easily. And his like subordinate asks him, why do you do it? Like, can you tell me what's the reasoning? And then he has this monologue single take where the camera is like zooming in, where he says ki every room he is in he wants to be the most important person in the room. So उसने कहा ये मेरा बचपन से था, where he would go everywhere and he'd ask himself, am I the most important person in the room? एंड उसने कहा लाइफ में सिर्फ 1 या 2 बार हुआ है व्हेन आई हैव बीन दैट पर्सन. और उसने कहा कि मैं डायरेक्ट गॉड के साथ compete कर रहा हूँ, मेरे को ह्यूमंस बहुत मीडियोकर लगते हैं. सो और मैं डायरेक्ट गॉड को आंसर करता हूँ. अ वेरी वेरी विलनिश एंटी हीरो काइंड ऑफ अ स्पीच, एंड यू आर लाइक डूड दिस इज वेरी पावरफुल. So Philip Price is one person I really wanted to talk about. Again, I wanted to do an episode on both Philip Price and White Rose, but थोड़ा बख्श दीजिएगा, मैं प्रॉपरली इनको मेंशन करना चाहता था. एंड मेरे को इसलिए भी बख्श दीजिएगा वानी, हिंडोल एंड दिशा की मैंने स्पीड रन नहीं किया. Some others, Chuck from Better Call Saul. Abhi Hindol and like I did an episode with the filmmaker Bijoy Nambiar, I think yesterday or 2 days back. We also did a big segment on Chuck also in that. Chuck was the elder sibling who kind of wanted the younger sibling to be good, but he wanted the younger sibling to be good in his own ways. So he became an anti-hero, and then eventually in a way he became the villain. एंड मेरे को नहीं लगता कि ऑन स्क्रीन पोर्ट्रेल ऑफ अ सिबलिंग रिलेशनशिप आज तक के इतिहास में इतनी पावरफुल है जितनी आज बेटर कॉल सॉल में थी. हेंस I have always been obsessed with the show the way I have been, not because of the action in it, not because of the Breaking Bad in it, but because of a relationship of two brothers, and that is the relationship between Chuck and Jimmy. So a big shout out to Chuck. Then there is this scene, there is this side character in Sopranos, उनका नाम होता है Patsy.
So Tony Soprano is having an affair with a girl, and like she's a girl जो बहुत call करने लग जाती है Tony Soprano के घर पे, and Tony Soprano is married, and Tony Soprano is getting married कि okay, I want her to stop like calling me at my place, my wife would get to know. So he sends Patsy to take care of it. एंड पैट्सी सोप्रानोज लिखोगे तो आपको सीन मिल जाएगा. भैया पैट्सी टेक्स अ फॉर अ ड्राइव एंड शी इज लाइक कि अगर तुम कुछ भी करोगे तो मैं चीख दूंगी, ये कर दूंगी. एंड पैट्सी एकदम से गन निकालता है और उसको बोलता है शट द फक अप. एंड वो उसको ऐसे डराता है वेयर ही सेज कि द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट दिस, इट वोंट बी सिनेमैटिक. एंड आई थिंक अबाउट दैट लाइन अ लॉट कि वो बोलता है कि मैं तेरे साथ जो भी करूंगा ना, trust me, it won't be cinematic. And that has stayed with me, and like in one scene you'll get to see ki the things this person can do to her. So Patsy is there from Sopranos. There is there is Patty from Leftovers. इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता. I want to talk about the movie Foxcatcher. उसमें Steve Carell थे. So everyone has seen Steve Carell in The Office, but you guys also need to see Steve Carell in Foxcatcher. मैं काफ़ी ऐसा I was shaken when I saw कि Steve Carell ये सब भी कर सकता है. And one of the reasons Steve Carell stopped doing The Office was because उसको Foxcatcher जैसी फिल्में करनी थी, and at that time Foxcatcher करनी थी. And सबसे पहले आप रिकग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कि वो स्टीव कैरल है, वो उसका मेकअप इतना खतरनाक है. एंड अ वेरी कोल्ड पर्सन जिसको बहुत इनसिक्योरिटी इश्यूज है, दैट टू पीपल लाइक मी और नॉट. एंड to make sure that he gets that validation, he can go to any level, and he can kill people. It's very very cold, it's very very dark. And actually वो एक कोच होता है जो अपने प्लेयर्स को कोकेन कराता है. बहुत fucked up movie है. And it's made by the filmmaker who has made Moneyball, by the way. So you guys really need to watch Foxcatcher. Then in the movie 2001 there is an artificially intelligent computer जिसका नाम होता है HAL. So HAL is also a villain. ये मैंने चुराई है ये recommendation. मैं greatest villains के जब देख रहा था, HAL was in a lot of lists. And then I'm like कि भाई अभी हम चारों जब एक साल बाद ये एपिसोड करेंगे तो उसमें ChatGPT 7 होगा टॉप पे. So yeah, it's going to be like that. So HAL was someone like what it does to the humans when they were in space. Yeah. So that is something I wanted to talk about. And again, great voice acting. मतलब हाल Yeah. जब भी दिखाया जाता है, it's that red blob on the screen, but it's just the voice, the way it speaks. मतलब great. ओके मेरे को मेरे इतने पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं. मेरी हाल की भी कवर फोटो होती थी लाइक कि आई एम सॉरी डेव, लाइक लिटरली आई हैव दिस कवर फोटो, आई एम सॉरी डेव, बिकॉज शी इज लाइक आई एम सॉरी डेव, आई हैव टू लेट यू गो वाली जो उसकी जो कवर फोटो थी. देन आई हैव क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज फ्रॉम इनग्लोरियस बास्टर्ड्स. Christoph Waltz also won an Oscar for this, and you guys might know him from that scene where he says, what are the words he says वो जब इटालियन बुलवा रहा होता है, gorilla me. But to see the Christoph Waltz at his best, आप scene 1 देखो, Inglorious Bastards का. So when people are making movies, they think a lot about a drink a character has to be drinking. Aaron Sorkin and David Fincher had a fight for the Social Network first scene because Aaron Sorkin used to think that they should be drinking wine in the first scene. But David Fincher was 100% sure that they should be drinking beer. And eventually they were drinking beer. So you have seen people drink beer, wine, gin and everything. दुनिया में कोई इतना डरावना दूध पी के हो सकता है, आपको इनग्लोरियस बास्टर्ड्स देख के रियलाइज होगा. He goes to a place जहाँ पे उसको पता होता है Jews छुपे हैं, and he is a Jew hunter, and he asks the family for milk. So he guzzles down that whole cup of milk in a second. So दूध पीते पीते मैंने आज तक किसी को इतना डरावना नहीं देखा. And in fact ये पूरा एक वो है कि like the greatest villains of all time, they all drink milk. ये एक पूरा है segment. I think there will be blood. Maybe the person is like I want to drink. Clockwork Orange में जो मेन बंदा वो भी दूध पीता है, तो दूध मत पियो. Homelander अभी चैट में किसी ने मेंशन किया उसको भी. This reminds me of that question that used to come in some of our history books. वो नाम नहीं बताते थे उस लीडर का, but they used to tell us their preference in terms of food, vegetarian and non-vegetarian है, alcohol पीता था नहीं पीता था, liked animals, did not like animals, etc. And Hitler was the best guy.
Oh. vegetarian, शराब नहीं पीता. Oh. And everyone would end up choosing them, and they were like, okay. Moral of the story was don't go on the dietary restrictions of people. Yeah. Nice one. Very nice. I'm a Very nice. non-vegetarian. Yeah. So, yeah, guys. So, क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज को इज्जत देना लाइफ में बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक अभी बहुत फोड़ने वाले लाइफ में. आई थिंक ही इज अ लेट ब्लूमर. ब्लूमर लाइक बमन ईरानी. वो बमन ईरानी ट्रैजेक्टरी लगती है मेरे को उनकी हॉलीवुड में. So that was one person I wanted to talk about. I think I have done a lot of them. Have you And done? I also want to talk about a real life villain who I had invited to come as a guest on Chalchitra Talks when we had 100 subscribers. That person did not take me seriously. But then that person met me at a 10,000. After we crossed 10,000 subscribers, that person met me at a screening and then, like, oh, tomorrow 10,000 हो गए, can I come on your channel again? That person was a guest on our channel eventually. But that person was a villain in our life. So, yeah, just saying. So there is a super chat. Anton, like, हाँ, कैसे pronounce करेंगे? I think I don't know. मतलब I don't remember the pronunciation, but yeah, we did talk about him. Yeah. Yeah. So this is one, and I'm done. Yeah. And also, like, can we also go into sports, like Ferrari की जो भी management team है, that is also a villain. You know, Vani, जब अपना भी video आया था ना, वो वाला, the audible one we did, you saw the comments on it. Justice for Leclerc's frame is a comment on it, क्योंकि आपने टेढ़ी लगाई हुई Yeah. है. It just looks better that way. Just does. Yeah. उस वजह से वो फर्स्ट नहीं आ रहा है यार, प्लीज. या सो उसकी किस्मत खराब है. He needs to switch from. So they are kind of pitching to Sebastian Vettel कि he comes in the some of the management वो जो भी है. And if he does, I'm switching teams. I'm sorry. Vettel over Ferrari. सो पीपल आर आल्सो मेंशनिंग गुलशन ग्रोवर की हमें बात करनी चाहिए थी अभी तक. एंड गुलशन ग्रोवर इज, पता नहीं मेरे दिमाग में 16 दिसंबर क्यों आ रहा है गुलशन ग्रोवर. ही वाज ही इन 16 दिसंबर. हाँ आई हाँ कैन अरे रिमेंबर. हाँ, ये वही तो है दुल्हन की विदाई का वक्त बदल गया. हाँ 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 Oh हाँ. yeah. वही तो है. गुलशन That ग्रोवर movie. इन दैट. Gulshan Grover is a great villain. In fact, even Shakti Kapoor. शक्ति कपूर वाज अ ग्रेट. गुलशन ग्रोवर और कौन कौन सी फिल्मों में विलन थे यार? करण अर्जुन में तो मतलब Oh. इतने सारे एवरी पॉसिबल विलन, मतलब वो एंड गेम थी विलन्स की, सारे विलन्स थे उसके अंदर. Oh man. Yeah. Yeah. So yeah, these were There was some of also the. this. I'm so sorry, I'm cutting you off. There also used to be this Bollywood actor who used to always come in negative roles. I think वो कुछ I am forgetting his name. Um, I don't even know how to describe him. I don't want to be racist. Um, कौन से, like which, like 90s 80s, कौन से टाइम पे? 90s, I think. And wait. Guys, my Uh, battery is about to die, so I Yeah, think we'll end it before it dies. Like, yeah. yeah, it's at 3% now. So Okay. I can't remember. Yeah. Let it be. The But real villain today is MacBook Is battery. So yeah. yeah. Ashish Vidyarthi, Sheesh Ashutosh Rana. Vidyarthi, legend villain. But yeah, we also should have done a Salman Khan as a villain segment. But See you guys. चलो bye. Why? I mean, I didn't. What the- अच्छा, तेरे मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ नहीं कुछ नहीं था. नहीं नहीं, वो विलन नहीं है भाई वो. That is a hero figure for most of North India. ठीक है. I Yeah. love how in Coffee with Karan, Amir Khan was given an option, who will you save if they were drowning, and he says Shah Rukh Khan, and he says क्योंकि भाई तो भगवान है वो बच जाए. Yeah. It was a very clever answer, but really, really nice. Yeah. So every time 3 to 2 है, 2 to 1 है, दिशा आपको हमें बताना है. राइट, अभी 3% पे है. द मोमेंट इट कम्स टू ऑन 2 आपको हमें बताना है. इससे हम रिटेंशन बढ़ाएंगे लोगों का. ठीक है. आई होप हम लोग बैटरी का रिटेंशन भी बढ़ा पाए, बट वो हाँ, पता है, टेक्नोलॉजी इससे आएगी. एक्चुअली बैटरी का रिटेंशन बढ़ता है इवेंचुअली, द इफ यू काइंड Yeah. ऑफ टेक इट ऑफ It's पावर आउट. वो पहले होता था ना कि आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द स्क्रीन जहाँ पे डाउनलोड हुआ है तो फिर डाउनलोड बढ़ जाता है थोड़ा. सो यू शुड ट्राई दैट. Yeah. Yeah. But this is great, guys. We quickly want to
wrap this by also talking about what's happening in Chalchitra. Vani is making great pancakes, and if you want to like see the stuff she is doing, आज आपको वानी का सुबह वाला stream देखना चाहिए. This is Vani's and Hindol's second stream of the day. So guys, Vani OP and Hindol OP हो जाए. They have spent almost 4 hours of their day on screen with you guys today. So and still like everyone is laughing and energetic. So Yeah. this is great. So yeah, The Vani did a saddest faces smile the brightest. yeah. And so आपको वो stream देखना चाहिए. And there is a super Super chat by chat. Kushal. This is Kushal is our guys, हर टीम में की गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ. We'll end with yeah. So Kushal, you got your answer. And other things which are happening, हिंडौल से हम कल मिलने वाले हैं. So a very interesting thing is happening this weekend. Yeah. Vani, Hindol, Pathik and I are going to be together. So आप क्या कंटेंट देखना चाहेंगे? अलग अलग बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज एंड मोस्ट ऑफ अस आर मीटिंग पथिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन रियल लाइफ. Yeah. Yeah. तो मैं थोड़ा आदाब वगैरह बोलने की प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ. नमस्कार, आदाब, मैं हूँ वैभव मुंजाल और so yeah, quite excited to I will be really happy अगर like by the end of our stay I can bring Pathik to like क्या बोल रही public and और इमेजिन नहीं तो I'll- हिंडोल फ्लिप कर जाए. नमस्कार, आदाब, मैं हूँ हिंडोल और that would be funny to see ना. It would be funny to see no Pathik. you doing this क्विज के बीच में आप करने लग गए. इमेजिन इरशाद. इरशाद हो जाए. क्या बात. Yeah, and we are doing a lot of great guest episodes. We have done one with Bijoy Nambiar, Abhishek Chaube. My favorite episode of the month was with the actor Zoya Hussain, and I'm like, ये out of the blue इतना crazy episode कैसे हो गया है. And मैंने सबसे पहले बोला इसको edit करो. So I think it's releasing this Sunday. And guys, a recommendation to all three of you also. Please watch it. Like I'm genuinely saying it. कुछ कभी कभी there is magic in episodes. It's one of those episodes. And we are recording more episodes in the coming days. Disha is recording one, and I am also recording an episode with Vishal Dayama. You must have seen him in a lot of Tanmay Bhatt videos. So we convinced to get like उनके साथ actually कल था, but उनकी तबीयत खराब हो गई. बॉम्बे में हो तो मास्क पहनो. जो बॉम्बे जा रहा है बीमार होके आ रहा है guys. So please कौन सा वायरस है वहाँ? H3N2 टाइप्स कुछ तो चल रहा है. This is like swine flu meets COVID meets like पता नहीं क्या क्या. Please meets Last of Us. So yeah, I should wear a mask tomorrow I guess. yeah, please wear a mask. And Indigo वाले देते नहीं एंड में. Sorry, नहीं देते हैं. ये ना स्पॉन्सर चाहिए. And yeah, that is it. Like चलचित्र का मैंने आपको बता दिया. अभी वानी का बुक ऑफ मंथ का जो डिस्कशन है इस महीने का विद मानु एस पिल्लई, द ग्रेट इंडियन नॉवल बाय शशि थरूर. कितनी पढ़ी हम लोगों को बताइए. And Vani, do you want to add anything about it? Yeah, just read the book and show up, guys. Yeah, a lot of Vani people had are a very traumatic experience in regard to her copy of it. Like to know what trauma we are talking about, go on Kitabi Cabins. Kitabi Cabins, अगर आप लोगों ने अगले कुछ हफ्तों में 10,000 सब्सक्राइबर्स टच करा दिए तो हम आपको पार्टी में बुलाएंगे. 10,000 सब्सक्राइबर्स वाली 5 लोगों को हम इनवाइट करेंगे. तो जो लोग हमें प्रूफ भेजेंगे कि yes, I am getting more people, we'll invite them. And yes, a party is happening. और हमारे बाकी चैनल्स भी सब्सक्राइब कर लो. सेकंड लास्ट सब. दिशा कितनी परसेंटेज पे हैं हम बैटरी? When I did this, it was at 2%, so it's going to. अच्छा, मेरे को पता नहीं चला कि ओके. या सो अभी 2 पे तो अभी बहुत कुछ हो जाएगा. एंड या सो सब्सक्राइब टू सिने ट्रिब्यूट्स पे कल प्रियांश का एक वीडियो आ रहा है. एंड प्रियांश हैज मेड अ फ्यूजन ऑफ विक्रम द मूवी एंड सक्सेशन. सो बहुत ज्यादा शानदार वीडियो है. 26 मार्च को सक्सेशन रिलीज हो रहा है गाइस. एंड वानी, वी ऑल आर गोइंग टू वॉच इट टुगेदर मंडे को सुबह. So that's actually the part of the plan. हमने ऐसे प्लान किए चीजें जो इस वीकेंड पे सब करने वाले हैं. So succession is coming. But कहाँ आएगा? वो अपन देख लेंगे ना यार. वो तो अपन हॉटस्टार पे आएगा ना 31 मार्च तक तो. नहीं कह रहे नहीं है. एक एपिसोड ला के क्या फायदा मतलब? नहीं अपन जेरेमी भाई को बोल देंगे भाई, वो कर देंगे अपना. एंड यस, प्लीज कीप वॉचिंग. इस स्ट्रीम को भी लाइक कीजिए. एंड
do become a member. Like membership is the main model that we are going after on Chalchitra Talks. और हमारे अभी 10 to 11 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनको हम क्लब्स बुलाते हैं. ये क्लब्स अभी धीरे धीरे ऑफलाइन भी होते जाएंगे, बहुत सारे इवेंट्स ऑफलाइन भी होते जाएंगे. अभी वी वर इन दिल्ली एंड वी हैड अ ब्यूटिफुल मीटअप at Sundar Nursery. A lot of people had showed up. Vani was there, Tanya was there, Nanika was there, Yash was there. So Vinayak was there, Saurav was there. So it was beautiful. A person was sweet enough to gift us Kushwant Singh's Delhi, like for Chalchitra Studio. So बहुत अच्छा लगा था हमें. And और मीटअप्स हम कराने वाले. एंड या गाइस स्टे सेफ, मास्क पहनो, बॉम्बे में हो तो, अदरवाइज भी मतलब ध्यान रखो. And we are going to see you guys soon. If you have watched the video till here, use the hashtag Kamalika Rocks in the chat, not and the comments, particularly in the comments chat में नहीं. So Kamalika की तारीफें करनी है आपको. And this is it. Vani, Hindol, Disha, any last words, guys, for the stream, not otherwise? Yeah. I'm on 1% battery. Great words to end with. Emotionally and Yeah. Chalo, we are all on 1% battery emotionally, so yeah, yeah. खुश रहो Yeah. यार सब लोग, and yeah, bye. Bye. Chalo guys, and I'm really sorry if we missed any super chats. It wasn't yeah. intentional. We were just trying to do it structurally. But this is amazing. Thank you Also, so guys, much. do like the stream and comment. The more you engage with the stream, the more it gets, the more views it gets, and the analytics are better. So, Yeah, और आप खत्म करने के बाद भी like कर सकते हो. अभी yeah. And 247 comment bhi likes है. kijiye. Yeah, comment भी कीजिए. And if you want to see all four of us together more often, हमें वो confidence दीजिए कि आप like करोगे and every stream is performing greatly, then we'll just keep coming like this. ठीक है? चलो guys. दिशा का लैपटॉप बंद होने से पहले हमने स्ट्रीम खत्म कर दिया as promised. Yes. Bye everyone. Chalo. Bye.